Is it? Yes, Deepak, but your voice is too much low. Is it for everyone or it's good? Yeah, it's very low. It's good for us. Uh, Okay, um, Deepak, I will check my settings. Okay. yeah. Please check someone. If it is low for everyone, then let me know. So it could be my mic problem, but I feel it's good. Is it? Is it Just low? Deepak. No, it's good, fine. Yeah, it's good. Yeah. Okay. Okay, let's then move ahead, right? So I'm going to do what today, right? First, we will again I will do an installation for you, right? Ansible installation. This time I will do a different installation. Last time we did a native installation, right? Using right Ansible site, we right installed certain commands to right Ansible. We can also install Ansible using right a Python command also. We will right be using that also. So we are aware, right? Ansible is nothing but what one of the utility or tool which can be installed in various ways. And then we will do an integration between two machines. Obviously, Ansible, as we know, right, it is an agentless, right? But obviously, we need to communicate to a remote machine. So obviously, my remote machine, right, need certain right authentication. So first, let me right use draw.io. Okay. So you can think like this. This is right, say my Ansible master. Obviously, Ansible master would have what? Ansible installed in, right? Ansible installed, and it's very easy to install Ansible, right? And we have some worker machines. Okay, and I could have certain DB machines. Okay, and Ansible master, right, would have you can say some code or infrastructure code, right, which I might as a user, right, as a right, infrastructure developer or infrastructure caretaker, right, I will write some infrastructure as a code, right, which right could be right part of my code repository, right, and using Jenkins or any right you can say build platform, I would be able to right call that infrastructure as a code. So obviously this user is writing right say code, right, and we can call it mainly a playbook basically, right? In case of Ansible, it is what a playbook. And obviously this playbook, right, would be lying on this Ansible master machine, right? Because I would be right running this particular infrastructure code, which is my playbook, right, over this machine. But to right whatever desired state that is contained in this playbook, right, need to be pushed right to this instance. For example, I want to right install web server in all this right web machine, and I want to install say MySQL right in DB instances which are there. So obviously, first of all, I need the information of my right infrastructure, the detail about this host, right? And I will use what? An inventory. So Ansible will need right this inventory, and we will talk about right inventory also when we'll jump into that part. So my clock is on. Okay. So I would have an inventory. An inventory could be what? Static क्लास डायनेमिक राइट स्टैटिक भी हो सकता है और मैं डायनेमिक इन्वेंटरी भी यूज कर सकता हूँ दोनों में डिफरेंस मैंने क्या बताया था एनीवन who can recall so static inventory would be what a plain
file in which I have the details of the host which I want to connect to, right? And how to connect to those hosts, right? So I already have detail about my web servers. I have already detail about my DB server. I will maintain them inside a file and write my Ansible core, or that is the master, right? My Ansible command, which is right, has been deployed after installing this Ansible utility, will interact with this inventory, identify the group of hosts, or section of hosts which are web servers, and use those IP to try to connect. First of all, obviously you will see whether you are able to connect to this web host or not. Okay. Static and dynamic inventory are Both, right? Dynamic inventory is what? Dynamic inventory is a script rather than a text file. Dynamic inventory would be what? A code. And this code will do what? This code will try to gather the information about the infrastructure. So for example, my IP of my machine is dynamic in nature. It might get restarted at end of the day. I will stop it, say, at the end of the day. And when I restart in the morning, obviously I will get a different public IP. So nature is what? Dynamic. Yes or no? Right? So I cannot keep it static in a file because it will change another day. So what I will do, I have those APIs to interact with AWS and fetch the IP details of my instance, which would have certain tags associated with it. So I can filter if this instance has this tag, I will fetch the IP and I will use that IP to connect to the web machine. So obviously I'm writing what? Some code to achieve that. Is this clear? Yes, Deepak. So obviously very basic difference. Static inventory is what? Could be a text file with static details of your infrastructure. Dynamic inventory is nothing but a script which is capable of fetching the details of infrastructure using the service APIs. Okay. So obviously it will try to check whether I have a connectivity between this instances or not. If it has connectivity, then it can do whatever playbook execution. It will initiate, it will place the playbook where? In the worker node. So all the heavy lifting means execution will not happen here in master. It will happen where? In the nodes. Obviously my installation that I want to perform would happen in this, and once my installation and everything is fine, I will obviously get the details as per the sequence of steps I have written. For example, first I want to install certain prerequisites. So all these details, all the logs which I'm executing here would be displayed in the master. So I could have something which is already in a good state, so it is in my code, but it will identify, okay, it is already there, so it will not make any change. So obviously it will just check, okay, I don't have to do any change here. So it will go for the next sequence. For example, in next sequence there is a change required, so obviously it will do the necessary change, and as per that, this log or this output of Ansible will show you how many changes it has done, and how many you can say actions which were already present. Obviously the desired state was already there, only the changes that has to be done will be performed on this. So obviously this communication is nothing but what Ansible uses SSH communication. The way to connect to this host would be the SSH connection. So obviously either you will use username or password, or you can use a passwordless connection, setting up between two hosts. So we are going to do that, so after this Ansible installation, we might have two nodes, and in these two nodes, we will be having our SSH communication from this host. So we will set something passwordless. Okay, so let's do that. So for example, I'm going to launch one instance. I might be we have installed. Let me check one thing. Can we use let launch a new machine? Nothing problem, right? So Ubuntu machine, right? Or Red Hat, any platform you can use, remember I told you, Ansible is not a cross platform, Cla- not a cross platform stuff, but yes, it can be installed in any variant of Linux OS, whether Ubuntu. But in Windows we cannot have Ansible master. We can have what? Nodes, worker nodes, which is Windows machine. This you have to keep in mind. Okay, so let me do the installation. This is my T2 Micro.
Review and launch. Launch. I will choose an existing key pair. So let it install. So meanwhile, right, if it comes in running, I will call it my Ansible master machine, right? So I will write it so there is no confusion, right? Ansible master. So I'm going to install my Ansible here. Okay. So it has come in running state, and we can have some worker machines. So for time being, right, I will do what? I will call this, right, this Docker weekdays. And I want, right, two different. One should be Red Hat, one should be Ubuntu, so that you can understand some nuisance related to, right, setting up, right, passwordless communication and, right, executing. So this is which machine? This is Ubuntu. Okay, so let's say, right, this is our web. I will change it to, right, web 01. Okay, and let me check what this machine is. This is again Ubuntu, so we need to launch one more machine. Okay, so what I will do, I will delete this, terminate this instance, and launch an new instance, and I will use a Red Hat. So let's select Imagine AMI, which is also a Red Hat instance. Okay, review and launch. Launch. Launch instance. While, all right, it is getting launched. I will call it DB01. Is someone waiting in the room? Yeah, Vikram and Tika. Okay, so now, right, we have say three instances. One is Ansible master and one is Web01, another is right, DB01. Now let's go to this instance, log into this instance. Copy the IP. Sir, Web01 and DB01 both are Red Hat instances. One is Red Hat, another is Ubuntu. So Web01 is an Ubuntu instance. If you see, right, this is a Ubuntu. So why I took two different machines, right, to make you understand, right, while right, doing an SSH, right. So username has its own importance, and why, right, we have right, in our uh, actual, right, we have a deployment user to do the deployments, right. Generally, right, there would be a deployment user rather than you are using your own user credential to do the deployments, right, or using root credentials. You should, or a root user, you don't do that, right. Generally use what, a different user, which is a deployment user. So that is what I want to make you understand, and how, right, if you have such case, right, where different right, infrastructure entities have different username, right, for servers, so how you will handle that basically. Okay, so I have copied this. I will log in. I will come out of this. Right, I have to come out of this. So this is Ubuntu instance, and I have to log in. So I'm logging in, right, from my uh, system to, right, this Ansible master machine. Right, I have logged in, right, and if I check, I do not have Ansible here, right. So if I do which Ansible or Ansible version, right, Ansible dash dash version, I don't have. So obviously, as I told you in the last lecture also,
we do not right, we actually don't have what we basically uh, uh, um, in a way, right, I told you that basically, right, Ansible is base technology is what Python. If we do not have Python, right, in our right whatever instance that we are using, then we have to make sure that Python is installed there. If it is not, right, obviously, right, you will not able to install Ansible. And by right default, right, most of the Unix operating systems comes with what Python. But if it is not there, so for example, you are doing some right setup in some Docker container which is very lightweight, right, in which Python is not installed, then obviously you have to explicitly install. In our case, right, if you see in this machine, Python 3, right, is already there. So this is the version, right, by default, right, it is installed, right. So obviously we have Python, so we can, right, do Ansible installation using what Python command. But we have to, right, to install that package, right, the Python package or Python third-party utility, right, the way we install Ansible. In that case, we have to ensure that pip3 is also there, right. Pip3 is a utility which through which we can install Python packages, na? Python installer package pip command. So let's check whether we have pip or not, right? Which pip3 it is not there, and which pip it is also not there, right? So obviously we have to do an right installation. So command is what? Sudo apt install Python 3 dash pip. So for Python 3 version, I will install Python 3 dash pip. Right. For Python 2 version, it would be Python dash pip, or in certain right OS Python 2 dash pip. Or also you can write download or install pip using a script which is very right, which is open in internet called getpip.py. So you can download and install. It will identify right itself the version that you want to install. So there are various way to do the right pip installation. So I did this. So it says Python 3 dash pip is right, has no installation candidate. So let's update first. Sudo apt update. Maybe this repository, right, do not contain this Python 3 dash pip. So let's update, and maybe right we will get that. If not, we will install in different way. Okay. So this time, see, it actually identified Python 3 dash pip. So we need to do update so that we get the repository. Now it is installing Python 3 or pip 3 basically. और दीपक ये पाइथन का जो पैकेज है वो क्लाइंट मशीन पे भी इंस्टॉल चाहिए, राइट? Obviously, right. So it is a kind of a prerequisite, right, for Ansible, because Ansible will run right a workload there in right you can say the remote machine. So if there we do not have right that you can say the Python out there, right, how will it will be able to execute? So it needs that. Okay. But we cannot treat that right Python as an agent, right? It is not an agent, it is just a prerequisite. Okay. Yes, yes. Okay, now if I do which pip3, you can see right the pip3 has been right there. Now last time, right, which I told you, right, the installation steps are like this. But today we are going to do a different installation, so you should be aware because you can see right the different kind of right installations. ये एक problem है. Yes, finally. Okay, now Ansible install Ubuntu or Red Hat, whatever, right? It will get you in this Ansible site itself. You have to follow those instructions, and right, it will get installed. So they will give you instructions like this, which is a native installation. So here you can see right all the variant of operating systems in which right you can right install. So if you choose this, right, you have to follow this right steps to do this. Straightforward, right? Not that hard, right? Just follow this command, you will able to install your Ansible right in this way. Now if I want to install using Python right package, then right you have to ensure these two things which I told you. Python hona chahiye, pip3 hona chahiye. Now using this sudo pip3 install Ansible.
Now it is doing what? It is installing, right, a Python, you can say, library, right, or this module or utility as a Python module. So it is just placing, downloading, right, this Ansible module, just like how you install Boto, right? I'm installing Ansible. This is again a way, right, through which you can do an Ansible installation. So both are different, right? These are right, a native way of using apt command and installing Ansible, and this is using Python, right? pip3 we are installing Ansible. और दीपक, वो जो नेटिव वे से हम एंसिबल इंस्टॉल करते हैं वहाँ पे भी वो पाइथन डाल देता है या फिर जरूरत नहीं पड़ती? सी पाइथन प्रीरिक्विजिट है, होना चाहिए, पाइथन ऑलरेडी आपका इंस्टॉल होना चाहिए, ठीक है? अगर आपके पास पाइथन नहीं है, राइट, ऑब्वियसली इट विल ट्राई टू, राइट, मेट दैट डिपेंडेंसी, तो वो आपको पाइथन 2 डाल देगा अगर बाय डिफॉल्ट जो भी है उसका, ठीक है? तो वो पाइथन डालता है, ओके? So it will take some time, let it take its time. Meanwhile, how to do a passwordless connectivity, right, between two machines? Can anyone tell me? मेरे को इन दोनों, ये Web01 और Ansible मास्टर के बीच में, राइट, पासवर्डलेस सेटअप करना है, तो कैसे करेंगे? शेयरिंग की पब्लिक बेस्ड। सो ऑब्वियसली की बेस्ड अगर करना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? Ansible मास्टर में जाके क्या कमांड रन करेंगे? कीजन लोकल कीजन SSH कीजन, राइट? और उसके बाद क्या होगा? तो की जनरेट होगी, राइट, आपकी .ssh डायरेक्टरी में। तो कौन सा की उठा के हम Web01 में डालेंगे और कौन से फाइल में डालेंगे इस नोड के? ऑथराइज्ड की ऑथराइज कीज में डालेंगे, करेक्ट। और कौन सा की डालेंगे? पब्लिक Public Public, key. public. Yeah. So obviously that is what we are going to do, right, in terms of, right, setting up right, passwordless connection. So हम दोनों के लिए करेंगे। और एक चीज ऑब्जर्व करेंगे, right, while doing SSH first, right, we ensure that SS is there, then we will create our, right, static inventory and we will run our ad hoc commands. Okay, perfect, right? We have our Ansible installed. Let's see Ansible version. We have, right, the latest version, right, 2.11.0. Okay, and it is based on Python version 3.8.5, right, which we have, right? So obviously my Python, I mean my Ansible is right now, right, there present, right? Now we have another instance. Let basically, right, copy the IP and try to do SSH first to that instance and see what happens, right? So say for example, let's take the Web01 first, which is what? A Ubuntu, right, machine. So I have copied the IP. I will go to my basically instance here, right? And I will try to SSH. What happened? Okay, I will try to, let me minimize the distraction, right? SSH, okay, and say the IP. Okay, if I do this, what will happen? How SSH, right, will try to, right, log into this instance? I hope I have copied the correct IP. Yep. How it will go, right? How it does the SSH? I'm not passing username. Then it will try to communicate with Ubuntu user. okay, so it will use the system's user, right? It will Yes. think, right, the system user, and right, if for example my remote machine is a Red Hat instance, so obviously it might fail because of the user authentication, right, username, correct? So now if I'm doing this, obviously it is saying me what? Permission denied, but see, it took what? Which user? Ubuntu. Ubuntu user, Ubuntu right? user. And if it is a Red Hat user, I have to explicitly say, right, while logging that, right, this is a Red Hat instance, so my user would be this, right? In that way I have to, right, do SSH again, right? It took the right user, and right now in case you want to, right, get some verbose information or right, logging level, you generally use -vvv, right?
with SSH. So it shows right how it is going to basically do the authentication, what kind of authentication it is doing, right? So somewhere, right, say it is trying with private key and or your public key, right, which is enabled. So, but this is not set in our case, so obviously it is failing, right? After doing certain attempts, right, it actually failed. Okay, now let's do that setup, right, between those two instances that we have created. So first of all, I do Vikram, not. Yes, Vikram message in the group that you got this. okay, he's waiting. Okay, let me admit him. Okay. Now to do that, first I will do what? I will generate my key, right? SSH keygen, right, -t. If you want to, by default it goes to RSA. If you want to use this -t RSA flag, it's fine. If you don't do that, it's also right, fine. It will generate a RSA type key only. Okay, now if I enter, obviously it is generating this key in my users, right, home directory, that is home ubuntu, and in .ssh folder, right, is generating both the id, RSA, and right, private and public key. Okay, and I'm not giving any password, so it will be passwordless. My key has been generated. Now where it is generated, it is generated in my home directory .ssh. If I go here, right, you can see from the timestamp that I have just generated this two key. Okay, IDRSA and IDRSA.pub. Now this key I need to place in, right, my remote machines authorization key, right, in web01 and right db01. So I will log in into them, right? So control alt t, will take a new terminal, we'll call cd downloads. The first one is already a, I think this is the same IP, right? Yeah. So this is right a Ubuntu instance, which is a remote. So I'm logged in, right? I will go to cd.ssh. And if I see here, I would only have authorized key. Here also I have right ID RSA, but which is a generated key old. But I will use this authorized keys, right, file, in which I will write place the content of idrsa.pub, right, from my Ansible master. Okay. So here first I will go to my master and I will cat idrsa.pub. Copy this entire content, right, from SSH to this, right? Copied entire content, copied it, right? I will vi authorize keys. I will not change this key, right? I will keep this key which is already there in authorized key as it is. Why? Anyone? Which key is this? Your local system key, I think. Yeah. It is right through which I am logging into this instance, right? AWS का जो public key हमने generate किया ना DevOps learning वाला, वो key है ये, right? जिससे PAM file जिसे मैं generate कर रहा हूँ, वो public key है ये. Authentication के लिए ये चाहिए रहता है ना? तो इसी के कारण मैं right अपने terminal से login कर पा रहा हूँ इस instance पे, right? AWS वाला key है ये, ठीक है? जिससे मैं login करता हूँ. तो मैं उसको चेंज नहीं करके मैं इंसर्ट मोड पे जाके मैंने एक नए लाइन पे, राइट, जो मेरा वाला जो की जनरेट है मेरे सर्वर का, राइट, एंसिबल मास्टर का, वो मैंने ऐड कर दिया. ठीक है. नाउ once added I will save it and now दीपक I will. ये जो हमने Yes. विकी यहाँ पे डाला है, ये हम SSH हाइफन कीजन से उसको जनरेट किया, राइट? करेक्ट. और उसको हमने मैन्युअली कॉपी किया, राइट, अथरज की के अंदर. सी हाँ, अभी तो हमने मैन्युअली किया, बट देयर आर कमांड कॉल्ड ssh copy, right, key id if in same network, right, you can easily write a script to, right, place them in authorized key of multiple machine. Okay, that can be done. Okay, Vishal, Yes, got it? yes, yes, General, it's general practice, right? In every organization you might have to do that, right? yes, yes. So once this is done, right, now I can try to SSH, right, this, right, this is my Ubuntu machine, and if I do this, right, you will see, right, I will log in, right, successfully to my remote machine. You can see, right, I am got in a new terminal with, right, this new, right, private IP of that machine. So I'm logged in into my web01, right, passwordless. So I will exit out it from here. So this is, I checked, right, my SSH is working with, right, my remote machine. Similarly,
Okay, I will launch another terminal, and this time I will log into my Red Hat machine, right, which is my DB01. Public IP, paste it. cd.ssh. Okay. There would be only authorized keys file. I will vi authorize keys. Okay. I go to next line. I will go to my master's machine, right, where I have the key. Think this one. I will copy this key. Here I will insert it. I will save it. Okay. Now I will copy the IP again. I will go to my Ansible master's machine. Okay. In here, if I try to SSH without user, obviously it will fail. Though my key is there, right? It will definitely fail because it will try to log in using what EC2 Ubuntu user rather than EC2 user. So if you see, it failed, right? Because obviously there is a user authentication failed because username which I have passed is wrong. Now if I pass EC2 dash user, it will work, right? I am able to log into the remote machine. Obviously that's the reason, right, when we are planning deployment in right production machine, so we tend to, right, create a common user, right, and we can call it deployment user, prod user, whatever. So those prod user would have their certain, right, restrictions, right, that the administrator of the network, right, will impose. So that is the reason behind, right, having a common user, because that will help you, right, in getting connected in such cases also, right, it will be helpful. But if it is not the case, again, right, you have to pass a username explicitly, and that what Ansible also gives you, right, a provision to do that through, right, automation also. So we will see that. तो ये कम्युनिकेशन सेटअप करना सबको समझ में आया, पासवर्डलेस किस तरीके से करना है, मास्टर का क्या, पब्लिक की, रिमोट के आपके वर्कर नोड जो भी हैं उनके ऑथराइज कीज फाइल में आपने अगर डाल दिया तो उनके बीच में पासवर्डलेस कम्युनिकेशन हो जाता है. There are many other ways also, right? Even, right, if you explore, there is something called ssh config file, right, in which there is, right, some setting called password authentication yes and no, right. In that way you can, right, tweak them also, but that is very crude way of doing it, right? So it's better to have, right, a public private key kind of authentication in place. I hope you got my point, this part, right? Now let's come to inventory, right? So I will minimize my all worker machine thing, right? So this is my master machine. Okay, and let me go to my home directory. And now let's understand how this static inventory are written, right, and how we can, right, exploit this, right, static inventory thing, and using Ansible ad hoc commands. So I'm creating a folder, right, so that I can segregate where I am, right, teaching what. So, ये Ansible master machine है, right sir? हाँ, ये Ansible master machine है, अभी इसी से हमने SSH किया था, right, EC2 इंस्टेंस पे, है ना, Yes, yes. देखने के लिए. और Ansible वर्जन करके भी आप चेक कर सकते हो, राइट, जहाँ पे Ansible इंस्टॉल्ड है उनमें उन दो मशीन पे Ansible इंस्टॉल्ड नहीं है. ओके, इन्वेंट्री, मैं जा रहा हूँ स्टैटिक इन्वेंट्री फोल्डर पे, मैं सेग्रीगेशन के लिए बना रहा हूँ जस्ट, राइट, कि हम अलग अलग जब डायनेमिक इन्वेंट्री करेंगे तो उसके लिए भी एक फोल्डर बनाएंगे.
यहाँ पे मैं एक इन्वेंटरी बनाऊंगा, राइट. आई कैन गिव माय इन्वेंटरी नेम वट एवर, राइट, सूट्स यू, राइट. फॉर एग्जांपल यू आर डूइंग एन ऑटोमेशन इन योर, राइट, say dev environment. You could have a separate, right, dev inventory file, right, stage wise inventory file also. There could be a common file with, right, sections in it, right, which, right, segregate the stages also. So there are many ways, right, to do it. So I'm just creating, right, something called, say, uh, inventory file, just an inventory, right, name. So this is, say, my file. It's just a text file, right? Nothing. I'm not using some DSL like YAML. It is just a plain text file. Now in this, I can have sections like, I can have one section. Let me get into insert mode, right? So I have a web server section in which I will have my web server IPs. Okay, and I create another section in which I can have my DB IPs, right? So it's a DB. Basically, right? So I have two sections. In web server section, right, whatever, right, IP that, right, I will keep, right. Obviously I have created access. I will write group, right. I had created a group, and in this group all the web server, right, IPs or inventory details would be there. So obviously my web 01 is this machine, right. Either I can copy the host name, right, DNS, whatever, right. I can take that. So here in example, let's say copy this IP and paste it. And this is basically a Ubuntu machine, so that's fine, right. Username is not a problem here, right. So this, also, right, I told you, right, if someone asks, right, if I have 100 of hosts, right, how I, right, will, right, I put all the 100 hosts one by one. So not required, right. You just have to, right, while creating those instance, right, the host name should be created, right, and with the proper naming convention, right, that you can use, right, with regular expiration, right, you can, right, place them. Like, for example, I could have, say, www dot, right, web server, right. I can use this, right, range specifies 0 dash, say, 99. So obviously I'm, right, placing 100 machine at a time, right. This is my host name, and these are, it is taking care of host names like, right, www.webserver0.com, right, 1.com, 2.com, in that way, right. I'm, right, mentioning all those, right, different hosts. So you can use a regular expression notation, right, to, in a single line you can, right, take care of 100 line. I will remove this line, right. Now I will go to DB. In DB also I have, right, another instance, so I will put it here, DB host. But remember, this DB host is an, right, a Red Hat So type of, just one right. question. Yes. सर वो वेब सर्वर में जो आईपी डाला है उसकी जगह उबंटू हम यूजर नेम डाल भी देंगे तो कोई इशू नहीं है. कोई इशू नहीं है, बट ऑब्वियसली वो हमें पता है ऑलरेडी कॉमन यूजर ही है, डिप्लॉयमेंट यूजर, तो नो नीड, राइट. इट विल टेक the same, right. So I'm not putting that. But in case of DB, right, it is a Red Hat machine. Then I have to place what, this Ansible underscore user, right, parameter, right, and here I have to pass which is the, what is the name of that user, right. So now while, right, trying to, right, connect through my Ansible ad hoc command, it will use this, right, Ansible user, right, EC2 user. So obviously अगर मैं pass नहीं करूँगा और try connect करने करूँगा तो मुझे error देगा, ठीक है. We can see that error also, right. It's similar to the SSH error that we were receiving. Okay, this clear. यहाँ डालने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली मेरा जो एंसिबल मास्टर का यूजर और इस मशीन का यूजर सेम है, राइट. नो नीड, राइट. SSH by default is the nature of using the, right, base OS user, right, while trying to connect. अब ये मैंने बना तो लिया ये, ठीक है. मेरा एंसिबल इन्वेंट स्टैटिक इन्वेंटरी, राइट, इज इन प्लेस. सर सपोज पूछो. यस. सर वो इन्वेंटरी फाइल में जो वेब सर्वर की आपने वो बताया कि हर एन नंबर ऑफ यूजर वेब सर्वर, अगर सबके होस्ट नेम अलग अलग है डिफरेंट, तो तो वी नीड टू राइट. तो obviously you have to put them, right. अगर सबके host name proper naming convention में नहीं है, there is no way out, right. Either you have to, right, pull through certain script all the host name and, right, place it, right, हाँ somewhere in the section web server. तो वो वो कर सकते. स्क्रिप्ट मेरा ये वो स्क्रिप्ट हम कहाँ यूज कैसे यूज करेंगे. Obviously it is, right, normal shell script, right, to create an inventory file, नो नो static inventory file. उसको पुट कहाँ पे करेंगे मतलब ये Invent इसके इन्वेंट inventory file के web server section के नीचे.
ओके, तो और बीच कहाँ में और तो हाँ, और कहाँ कर सकते हो, आपको अगर वेब सर्वर सेक्शन है और आपके वेब सर्वर के होस्ट के नेम प्रॉपर नेमिंग कन्वेंशन में नहीं है, राइट, और दो चॉइस है आपके पास, अगर आपको मैनुअली है तो आपको मैनुअली करना पड़ेगा, लेकिन 100 होस्ट आप मैनुअली नहीं करोगे, राइट, तो ऑब्वियसली समवेयर देयर वुड बी डेटा, राइट, आपने कहीं स्टोर करके रखा है या कुछ है ऐसा, तो वहां से आप उस तरह के होस्ट नेम को, राइट, प्रोग्रामेटिकली बनाओगे, लिस्ट बनाओगे, एंड बट अगेन दैट वुड नॉट बी अ राइट वे, राइट, ऑफ डूइंग इट। इनिशियली स्टेज पे ही ऐसा नहीं करना चाहिए कि आपका नेमिंग कन्वेंशन, राइट, प्रॉपर नहीं है। इट विल गिव यू लॉट ऑफ, राइट, चैलेंजेस, जैसे अभी आपने बोला ये चैलेंज आएंगे, या फिर आप थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करोगे स्क्रिप्ट लिख के, राइट, फिर आप मेनली, राइट, कुछ ऑक यूटिलिटी यूज करोगे, सेट यूटिलिटी यूज करोगे, और राइट प्लेस करोगे, एक फाइल बनाओगे, राइट, स्टैटिक इन्वेंटरी, और उस पे उसको यूज करोगे अपने एंसिबल एडहॉक कमांड में। गॉट Rajiv, what I mean to say? यस यस यस। This is only way out there, right? And obviously it is not a good practice at the end, right? दीपक, एक क्वेश्चन ऐसा था हम्म। कि आपने अभी जो इन्वेंटरी फाइल के अंदर जो यूजर दिया है एनसिपल अंडरस्कोर यूजर इक्वल्स टू EC2 हाइफन यूजर, राइट, ये रेड हैट इंस्टेंस के लिए है, राइट? Correct. और यही चीज, और हमारा जो एनसिबल मास्टर है वो उबंटू है, और यही चीज को अवॉइड करने के लिए मींस विदाउट यूजर नेम हम डिप्लॉयमेंट नाम का यूजर बनाएंगे, राइट? That would be great, right? अगर एक कॉमन यूजर बनाया तो हम उससे हम डिप्लॉयमेंट करेंगे, तो हमें ये सब एंसिबल यूजर डालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यस। Okay, now we have this, right, thing in place. Now let's see, right, how Ansible ad hoc commands are running. Currently we are not in playbook, right? We are just running Ansible ad hoc command, and I have talked to you about certain modules, है ना, कि मॉड्यूल क्या होते हैं। Ansible मॉड्यूल इंडेक्स पेज पे आपको मैं लेके गया था। मैं एक बार आपको और दिखा देता हूँ कि वो मॉड्यूल कितने सारे मॉड्यूल्स है, और हम उसी कमांड को यहाँ पे यूज करके, राइट, वी विल कनेक्ट टू दिस वेब सर्वर एंड एग्जीक्यूट। तो टू लर्न अबाउट दोज मॉड्यूल कमांड, देयर इज एन इंडेक्स पेज, right, Ansible module index, which is more specifically for right playbook। तो बहुत अच्छा डॉक्यूमेंटेशन है यहाँ पे, राइट। तो अभी जो मैं मॉड्यूल यूज करूंगा, जैसे मैं अभी पिंग मॉड्यूल यूज करूंगा, कमांड मॉड्यूल यूज करूंगा, एड हॉक कमांड आपको समझाने के लिए, राइट, दोज ऑल मॉड्यूल्स आर लिस्टेड हेयर। तो अगर मैं कंट्रोल एफ यहाँ पे पिंग सर्च करता हूँ, ठीक है, तो डायरेक्टली पी पे जाते हैं हम लोग। See the volume, right, is too big। स्क्रॉल करते हैं। See, this ping module is what try to connect to host, verify usable Python and return Pong on success, right? तो ये जो ping module है, ये क्या चेक कर रहा है? चेक करता है कि रिमोट मशीन के साथ का कनेक्टिविटी प्रॉपर है कि नहीं है, ठीक है। And right in playbook you can use something like this, right? Some examples are given, right? Induce an exception to see what happens, right? तो ये सिंपल मॉड्यूल है जिसका आउटपुट, राइट, डिस्क्रिप्शन अगर पोंग आया तो मतलब आपका सक्सेस है, अगर आपका नहीं आया तो इसका मतलब क्या है, गड़बड़ है कुछ, ठीक है। तो दिस इज वन मॉड्यूल, राइट, which is we can generally use for checking whether the connectivity is there or not. Similarly, right, we have like a command module जो मैं एड हॉक कमांड में आपको दिखाऊंगा, तो उसका भी डॉक्यूमेंटेशन आप देख सकते हो। सी ओ या, सो दिस इज द कमांड। ये कमांड मॉड्यूल क्या कर रहा है? मॉड्यूल टेक्स द कमांड, मतलब आपको कोई एग्जीक्यूट करना है कमांड रिमोट मशीन पे, राइट, से सम यूनिक्स कमांड और सर्टेन, राइट, यू कैन से like command or whatever command that you want, right, unix command. So using this command module you can pass them using, right, passing this argument, like uh, if you want to change directory, right, if you want a command to run, then you can use cmd, right. So these are the different, right, parameters that you can, or argument, right, to the command module that you can pass. Typical examples are given here, right. For example, if you want to right, create something, right, and basically you want to run this script, so you use cmd, right, to run a file which is already present in your remote machine called make database.sh, and write db user and db name.
but you have to basically ensure that this part to database is there or not. अगर ये नहीं है तभी वो चलेगा. तो यहाँ पे लिखा देखो, run command if part to database does not exist. अगर ये नहीं है तो ये कमांड एग्जीक्यूट होना चाहिए. ठीक है. सो various ways. Similarly, if you want to change directory, if you want to do certain execution, so you can use basically this command model, which is also very useful in terms of doing certain automation. So हम लोग ad hoc command करके हम कुछ command execute करेंगे, and let's see how we generally execute those command. तो अभी आ जाते हैं हम अपने terminal master पे. कमांड कैसे है? एनसिबल इज द कमांड जो हमें एनसिबल इंस्टॉल करके मिला. सिमिलरली अगर प्लेबुक जब हम रन करेंगे तो एनसिबल प्लेबुक इज द कमांड. So these are the utilities which has come after installation of Ansible. So in Ansible I want to operate on what? Want to operate on static inventory. So -i flag looks for an inventory file that you have created. आपने जो बनाया, अगर मैं -i फ्लैग नहीं डालूंगा तो क्या करेगा? वो डिफॉल्ट इन्वेंटरी फाइल को ढूंढने जाएगा. डिफॉल्ट इन्वेंटरी फाइल कहाँ रहता है? एनीवन आइडिया? etc एनसिबल में उसका फाइल का नाम रहता है होस्ट. ठीक है. तो etc एनसिबल में होस्ट फाइल को जाके ढूंढता है. अगर वो भी नहीं मिला तो ऑब्वियसली वो बोलेगा भाई मैं मतलब एक्सेप्शन एरर देगा. बट अगर मैं चाहता हूं मैं खुद के इन्वेंटरी फाइल से करूं, आई डोंट वांट दैट डिफॉल्ट इन्वेंटरी फाइल, आई वांट टू use my inventory file which I have created. So -i flag in which you can specify the path where your inventory file is. So you can either use absolute or relative path of your inventory. Currently I'm in a current directory where the static inventory file is already there, so I can use a relative path inventory, or I can also use this path like home ubuntu static inventory and then the file name whatever. So I can use both way, either use a relative path or either use an absolute path. It's your choice. Okay, so I will use relative path. Okay, and then the module that you want to use, so using -m flag. So -m, which module that you want to use. For example, I want to use ping module. Okay, and ping what? I want to ping my servers to check whether the connectivity is not there. So I can do a specific group level check also. For example, I want to check for all the web server instances that I have, so I use that group name, web server, and if I hit, see, I got what? Response as what? Pong means what? There is a successful connection, basically. But it only checked for which IP? It checked for the web server IP, only, not the DB one. Similarly, if I want to check for DB group, I can do what? DB section. So obviously, group wise execution would be possible, passing this section name or group name. Now here also, I can see it actually tried to SSH. And if you want to debug what's actually happening, again, like SSH -vv flag you can use. It will show you what all it tried, what SSH execution it tried, which user it took, so you can able to identify in that way, basically it works. So it's like an SSH operation it is doing behind the scene, at the remote machine, and it's able to give you and output basically how the things basically Ansible uses its workload to execute in the you can say worker machine. Now let's execute command and see whether I can execute commands. Or another thing, instead of db, if I do all, means what it will do? All means what? Whatever IPs, whatever, irrespective of your group, it will try to ping all the IPs which are available there, So say it picked DB also, it picked web server both, and okay. Now similarly like this, I can run a command module, which we have seen there, command. Obviously I want to pass an argument, so argv, if you see the document here, here is one example where people have used what? Argv, so argv is what? Nothing but an argument, to execute whatever command that you want to run, whether a script or what. So this -a is nothing but an argument to the command module which you want to execute. And I want to execute a, say, Unix command. Say I want to run some command to check the memory, like free -m, in my remote machine. So first I want to check for my remote web server. See,
executed and give me the right memory details of the remote machine, right? And if I do for DB, see, it is giving me what? DB's right memory details, right? And if I want to run for both, one by one, right, it will give me for both, right? First for this and second for this. Similarly, I can run any command. I can run df minus h. Now, if I want to create a directory there, I can create a directory there also, right? See, it is giving me what? Is this clear now? Can you understand what would be the role of dynamic inventory? Is it clear, guys? Hello. सर वन क्वेश्चन Mm-hmm. सर सपोज दैट अगर जैसे डीएफ 5 चलाई है तो उसने जो इन्फॉर्मेशन दी अभी ये जो इन्फॉर्मेशन दी है इसके कुछ टाइम बाद में रिमोट मशीन में कुछ डिस्क रिमूव हुआ है या ऐड हुआ है Mm-hmm. और देन हमने उसकी इन्फॉर्मेशन पुल की है तो वो जो चेंज्ड इन्फॉर्मेशन है वो कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि प्रीवियस से ये चेंज हुआ? देखो ये की देख रहे हो, ये जो दिख रहा है चेंज्ड, अगर वो पहली बार कुछ एग्जीक्यूट कर रहा है, राइट, हाँ, और कुछ आउटपुट नया लाके दे रहा है तो क्या रहेगा? चेंज। बट अगर मेरा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है और उसमें कोई भी चेंज नहीं आया है तो चेंज की जगह क्या आएगा? ओके आएगा। ग्रीन कलर का क्या आएगा? ओके आएगा। जैसे हम लोग को पिंग के केस पे अगर आप देखोगे तो ये ग्रीन कलर में राइट डाल रहा है ना? जब भी कोई चेंजेस आइडेंटिफाई होता है या आपके स्क्रिप्ट में कुछ चेंज किया है, राइट, देन इट विल डू व्हाट? इट विल प्रिंट राइट चेंज। जब हम प्लेबुक रन करेंगे, राइट, उसमें आपको समझ में भी आएगा। जैसे मेरा ऑलरेडी अपाचे सर्वर इंस्टॉल्ड है, बस मैं उसमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने जा रहा हूँ, तो इंस्टॉलेशन वापस नहीं करेगा, इंस्टॉलेशन इज ऑलरेडी इन प्लेस, राइट। तो क्या बोलेगा? ओके। ओके, उसको ग्रीन कलर में शो करेगा। अगर कोई चेंज आइडेंटिफाई हुआ और इसने कुछ चेंज किया, मॉडिफाई किया है, तो आपको क्या दिखाएगा? दिस कलर में। अगर कुछ एरर है, राइट, obviously it will show in red color. Now for example, if I let's try that, right? So It's मैं also the information. yeah, so if I say create a mkdir, right, and say in home directory, right, I create, right, Ansible dir, say I just creating something, right, let me use -p flag also, but not required. तो मैं दोनों वहाँ पे ना ये बनाना चाह रहा हूँ। अभी देखो इसने दोनों जगह पे ये डायरेक्टरी क्रिएट करने की कोशिश की। अभी मैं सेकंड टाइम रन करूँगा तो अभी इसने चेंज ही बताया। अगर मतलब it is doing the change operation again, it is overwriting or creating again, right, then therefore it is giving change। but अगर वो नहीं करेगा, यहाँ पे जाके देखते हैं, उसने डायरेक्टरी तो बना दी होगी पक्का, है ना? मेरे में Without hyphen p हम चेक करेंगे। हाँ, मैंने वो चलेगा, वो mkdir का काम ही वही है कि वो राइट बनाएगा ही बनाएगा। -p is not forceful execution, right? that we will see right in playbook for sure। ये देखो यहाँ पे इसने ansible dir बना दिया, ठीक है। now if I see 428 timestamp and run it, okay, again go here, return code status इसका क्या दिया? platform linux this no, I think in this दीपक case, एक right, बार वो -p निकाल के ट्राई करो। क्या बोल रहा है ये? फाइल Already होगा। एक्सटेंशन ऑन नहीं, ये फेल्ड दे रहा है। ये बोल रहा है फाइल एक्सटेंशन 0 रिटर्न कोड, तो ये -p के साथ नहीं चलेगा, राइट? कैन नॉट क्रिएट डायरेक्टरी, राइट, होम ubuntu ansible directory, that is the reason because it's already there, right? that is the reason, right, it's failing, right? अगर यही हम ansible dir 1 कर देते हैं, it's working, right? so obviously -p अंडरस्टैंड्स, राइट, वापस से उसको, इसीलिए वो चेंज भी आ रहा है। रीजन भी चेंज आने का क्या है? वो एग्जिस्टेंस चेक नहीं कर रहा है mkdir कमांड, राइट?
mkdir कमांड क्या कर रहा है, वो बनाएगा ही बनाएगा, राइट। तो इन्वेंट्री के लिए क्या है, वो एक एक्शन कर रहा है जो कि चेंज एक्शन ही है, राइट। तो वो ऑलरेडी बेसिकली एंसिबल इज नॉट हैंडलिंग द कमांड दैट इज गेटिंग एग्जीक्यूटेड इन कमांड मॉड्यूल, राइट। ऑब्वियसली वो तो हमेशा चेंज देगा, बट वो सेम ही चीज बना रहा है, राइट, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, so that Can is we fine. can we create that file using touch and change that context folder? So if you do a touch creation, it generally changes the timestamp. It is always a touch. Again, it is a what kind of activity? It is again activity which is like changing something, right? Changing the timestamp of the file, right? So अगर मैंने मान लो इस डायरेक्टरी पे टच रन किया, फिर से वापस से रन किया, तो ऑब्वियसली क्या होगा, टाइम स्टैम्प तो चेंज होगा ही होगा इन सेकंड्स आल्सो, राइट। तो अगेन इट विल कम, राइट, बेसिकली एज अ चेंज। गॉट माय पॉइंट? सी ग्रीन कब आएगा वो आपको एंसिबल प्लेबुक में मैं आपको शो करूंगा। देखो एक्शन क्या है, मेरे को कुछ एक्टिविटी ऐसा करना है जहां पे मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ किसी मॉड्यूल से, ठीक है ना। एक वो कर सकते हैं हम लोग, अभी हमारे पास क्या है, एपीटी मॉड्यूल है ना, एपीटी मॉड्यूल से हम राइट इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। एपीटी और हमारा क्या वेब सर्वर है, ठीक है। वेब सर्वर में हम एपीटी मॉड्यूल रन कर सकते हैं, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वहां पे अपाचे 2 इंस्टॉल करवाऊंगा, ठीक है। वेब सर्वर, ठीक है ना, वेब सर्वर ही है ना अपना, कि वेब सर्वर है, Web server. वेब सर्वर ही है, ठीक है, दैट्स फाइन देन। तो इसमें गया और यहाँ पे मैंने पैकेज नेम आर्ग्यूमेंट जो है, एपीटी को जो आर्ग्यूमेंट है वो दे दिया पैकेज नेम अपाचे 2। इसमें और भी हम बहुत सारी चीजें राइट डाल सकते हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, रिमोट मशीन पे अपाचे 2 पैकेज डालने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। लेट मी रन दिस। तो इसने क्या किया है, वहां पे अपाचे 2 इंस्टॉल कर दिया, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसने, आई थिंक एंसिबल प्लेबुक विल हैंडल दैट, बट एंसिबल विल नॉट हैंडल दैट, बट इसने इंस्टॉल तो कर दिया है। अभी यहाँ पे हम जाके देखेंगे अगर यूबुंटू मशीन पे हमारा कौन सा है, दिस इज अ यूबुंटू राइट रिमोट मशीन। अगर हम पीएस यूएक्स पाइप क्रैप अपाचे देखेंगे, ठीक है, मतलब सर्विस स्टार्ट नहीं हुई होगी बट अपाचे आ गया होगा, राइट। इसने क्या बोला है, कैशे अपडेटेड टाइम एंसिबल फैक्ट्स एपीटी कमांड चेंज्ड फॉल्स कैश अपडेटेड, राइट। यहाँ पे अगर एक और चीज है, सर्विस स्टार्ट कर देते हैं, राइट। सर्विस सी कमांड -a and let's run this systemctl start apache 2। दीपक, यहाँ पे जो आपने अभी सर्विस सिस्टम सिटिल नाम का कमांड दिया, राइट? हाँ तो उसकी जगह पे हम सर्विस मॉडल भी यूज कर सकते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल। ओके। अब इसने क्या बोला, इसको अपाचे 2 सर्विस मिला ही नहीं, राइट। फॉर डिटेल्स रिटर्न फ्रॉम सिस्टम स्टेटस अपाचे 2, और इसने यहाँ पे मैंने आप दिया -a नेम अपाचे 2 मॉड्यूल दिया Sudo इसने, तो नहीं लगेगा? नहीं सूडो नहीं लगना चाहिए, हाँ सूडो लगना चाहिए, तो बिल्कुल। और इस केस में राइट, बट इसने उस समय मेरे को एरर देना चाहिए था ना, यहाँ पे इसने मुझे एरर क्यों नहीं दिया, आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट दिस फैक्ट, राइट। उसने कैशे अपडेटेड टाइम लिया, कैश अपडेटेड नेम, इसको इंस्टॉल करना आई चाहिए थिंक था। दीपक ऐसा भी हो सकता है कि आपने जो कमांड दिया है एनसीबल -i इन्वेंटरी, उसके अंदर आपने इसका नाम दिया है, पैकेज का नाम दिया है नेम के अंदर, उसके अंदर आपको स्टेट भी देना पड़ेगा, स्टेट इक्वल्स टू प्रेजेंट। हाँ बिल्कुल, वो देना पड़ेगा, बट बाय डिफॉल्ट स्टेट भी तो लेना ही चाहिए उसको, करेक्ट। You are right, but I'm just checking one of the lab that I have in my Ansible, which is for dynamic inventory, ठीक है।
उसमें मैंने इंस्टॉल किया है, तो यहाँ पे जनरली हमने स्टेट इंस्टॉल्ड अपडेट कैशे टू, तो अपडेट कैशे उसने ले लिया, ठीक है। और ये दिस वन आई वाज लुकिंग फॉर, राइट, टू चेंज टू रन एज अ रूट यूजर बेसिकली, ठीक है। मींस उसने एज अ रूट यूजर रन किया। हाँ, तो become, that is minus b is a flag, right, to become a user. So as a root user, so मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ, ठीक है, -m apt name apache 2, देखते हैं भी, but ये वही है, it should show me, right, whether it is right installing things, right. I think मैं state भी डाल देता हूँ, state equal to present, come on, so वेब सर्वर पे ही डाला है, और अगर मैंने वही systemctl स्टार्ट भी किया तो उसने इंस्टॉल तो किया है, आई एम प्रीटी श्योर। अगर वो नहीं तो एरर देता, राइट, क्योंकि आपका काम ही है उसको इंस्टॉल करना, राइट, अगर उसको पैकेज नेम दिया है तो। और ये सिंस एंसिबल एड हॉक कमांड है, तो now see it has, right, shows that it has been changed, right, because I did what, a start। अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये स्टार्ट हुआ हो, ठीक है। मेरे ख्याल से बिकम यूजर के कारण वो नहीं चल रहा था, रीस्टार्ट वाला, मतलब उस समय भी वो चलता, लेकिन बिकम रूट एज अ सूडो यूजर रन नहीं किया ना, दैट इज द रीजन। अभी यहाँ पे अगर हम देखेंगे psa ux pipe grep apache, तो चलेगा, ठीक है, यहाँ पे सर्विस रन हो गया रिमोट पे, करेक्ट। लेकिन अगेन द क्वेश्चन इज, उसने इंस्टॉल करने के बाद, अभी अगर मैं जब इंस्टॉल करने जा रहा हूँ तो वो चेंज बताना चाहिए था, बट हमेशा क्या, मतलब चेंज नहीं बताना चाहिए था, इसलिए वो हमेशा सक्सेस दिखा रहा है। बट ऑब्वियसली अगर मैं कुछ रीस्टार्ट, सर्विस स्टार्ट, ये सब करूंगा, राइट, ऑब्वियसली मैं एक चेंज कर रहा हूँ, तो इसलिए वो हमेशा येलो कलर में आपको दिखा रहा है। अगर मैंने यहाँ मान लो स्टेटस रन किया, ठीक है, स्टेटस इज व्हाट, स्टेटस का आउटपुट दिया, राइट। अगेन लेट्स रन द स्टेटस, so obviously it is, right, I am executing something, right, which is actually Ansible command is, right, returning, right, in context. But if you see my इंस्टॉलेशन इज वन टाइम एक्टिविटी, है ना, एक बार किया, मैं बार बार अगर उसमें कोई कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं कर रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे ये चेंज नहीं चाहिए, वो आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी उसका डिजायर स्टेट मेंटेन्ड है और मैं उसके ऊपर कुछ एक्शन लेना ही नहीं चाहता। तो उस केस में आपका जो ये जो स्टेटस है, राइट, ये ओके आएगा। बट इन केस अगर आप कोई कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर रहे हो, ओवरराइट कर रहे हो किसी फाइल को या कुछ चेंज कर रहे हो, तो एंसिबल प्लेबुक बेसिकली क्या देखता है, वो इस नेचर से देखता है कि भाई ये चीज सही है कि नहीं है, राइट, उसमें कुछ मॉडिफाई हुआ है, तो अगर मॉडिफाई कर पाता है तो सक्सेसफुल मॉडिफाई किया तो चेंज स्टेट दिखाएगा, अगर सक्सेसफुल नहीं कर पाया तो फेल्ड स्टेट दिखाएगा, विच इज रेड कलर, उस हिसाब से आइडेंटिफाई करता है। जब हम प्लेबुक करेंगे वहां पे आपको प्रॉपर विजुअलाइजेशन मिलेगा, उस लैब में आपको पता चलेगा कि दो वी आर एग्जीक्यूटिंग दैट एक्शन इंस्टॉलेशन, बट इट विल मार्क इट एज एन ओके, क्योंकि एंसिबल प्लेबुक किस पे काम करता है, एक्शंस पे काम करता है। एंसिबल एडहॉक कमांड क्या, एडहॉक एग्जीक्यूशन पे काम करता है। तो उसके लिए चीजें जनरली क्या, या तो सक्सेस है या तो फेलियर है, राइट, रिटर्न कोड के बेसिस पे काम करता है। अगर आपको रिटर्न कोड आउट ऑफ 0 आया, कुछ अलग आया, तो फेल स्टेट दिखाएगा। अगर रिटर्न कोड आया और उसने कुछ आउटपुट दिया जो आप एग्जीक्यूट कर रहे हो उसके लिए वो चेंज है, तो वो चेंज स्टेट में दिखा रहा है। तो ऑब्वियसली एडहॉक कमांड वुड नॉट बी दैट फ्रूटफुल लाइक एंसिबल प्लेबुक, दैट इज व्हाट आई मीन टू से। We can see, right, in case of mkdir also, until unless I doesn't put a check कि भाई ये फाइल एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, तब तक वो उसको mkdir कमांड को रन करते रहेगा। और mkdir रन करेगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, दो ही चीज हो सकते हैं, या तो डायरेक्टरी बना पाएगा या नहीं बना पाएगा। अगर बना पाएगा, राइट, तो ऑब्वियसली वो क्या कर रहा है, ओवरराइड एक्शन कर रहा है, तो वो क्या एक चेंज स्टेट कर रहा है। दैट्स द रीजन। अब ये पिंग के केस में अगर देखो या इंस्टॉलेशन के केस पे देखो, ये किस तरीके से हैंडल कर रहा है। अगर मान लो वापस से मैं ये रन करता हूँ, अपाचे 2 का इंस्टॉलेशन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, राइट, चीजें वहां पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, क्या दे रहा है, ग्रीन कलर में दे रहा है, राइट, और सक्सेस बोल रहा है। यहाँ पे ये क्यों चेंज नहीं बोल रहा है, जबकि ऑब्वियसली मैं तो इंस्टॉलेशन कमांड वापस से रन कर रहा हूँ ना, इंस्टॉल अपाचे। तो दिस इज द रीजन एंसिबल एडो कमांड, राइट, विल
right behave right differently than Ansible playbook for sure, but still it is saying that the Apache 2 is already installed, right? So desired state is there, so it is printing you in green. Same with the ping. If it is able to ping means right your state is what there is a right gather fact जो बोलते हैं ना Ansible का कनेक्टिविटी वो प्रॉपर इन प्लेस है, इसलिए वो ग्रीन कलर में शो कर रहा है. तो इससे हम एनालाइज और समझ नहीं पाएंगे कि भाई ये डिजायर स्टेट मेंटेनेंस कर रहा है कि नहीं कर रहा है. सो Ansible ad hoc command is not the right place to check whether right state change colors or something right will right benefit you. It will happen through Ansible playbook which is your right मेंटेनेंस कोड, जहां पे आप एक्शन राइट बार बार रिपीट करोगे तो वहां पे आपको पता चलेगा कि ओके चेंज फील्ड किस तरीके से आता है. यू गॉट माय पॉइंट व्हाट आई वांट टू से गाइस, और एनी क्वेश्चंस? सर एक क्वेश्चन होता है कि जैसे अगर मैं कोई ऐसा कमांड रखता हूँ जिसके लिए मुझे यूजर इनपुट की जरूरत है, यूजर यूजर इनपुट की जरूरत. दैट मींस कि अगर जैसे मैं रिपोर्ट मशीन का सोर्स रिपोर्ट निकालता हूँ, हाँ तो सोर्स रिपोर्ट निकालने के लिए मुझे कुछ यूजर इनपुट देने पड़ेगा वहाँ पे. बिल्कुल. तो हाँ देखो उस केस में क्या होगा, आप कहीं पे कॉन्फ़िगरेशन पे आपके जो भी इनपुट्स है रखोगे राइट. मतलब यू विल नॉट रन राइट योर इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड इन विच यू विल बेसिकली राइट एड हॉक आप इनपुट दे रहे हो उसको, है ना. या तो आप एक वेरिएबल पास करोगे, तो देयर इज अ मैकेनिज्म ऑफ पासिंग राइट वेरिएबल्स डायरेक्टली राइट टू द एड हॉक कमांड लाइक var राइट. फ्लैग से आप क्या कर सकते हो, वेरिएबल पास कर सकते हो. गॉट माय पॉइंट राजीव? Yes, yes. So That means कि we need to create a yes, variable. yes. You have to create a variable, and the approach is right. You should use right code config separation concept जो मैंने बताया था. आपके जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल हैं वो आप मैनेज करोगे राइट, और उस कॉन्फ़िगरेशन फाइल में आपके इनपुट रखोगे, जिसको जब आप रन करोगे तो आपको कॉन्फ़िगरेशन फाइल में वो होना चाहिए, वहां से वो रीड करके क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा. ठीक है, गॉट माय पॉइंट Yes. Rajiv? What I mean to say. So this is what we will again see in right Ansible playbook, जहाँ पे हमारा वेरिएबल फोल्डर होगा राइट, उसके अंदर से हम सोर्स करेंगे, वैल्यू लेंगे राइट. जैसे कि आपका मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मुझे एक इंस्टेंस क्रिएट करना है, ठीक है, और इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए मुझे क्या क्या इनपुट देने पड़ेंगे, कौन सा इमेज है ना, कौन सा टाइप ऑफ मशीन, दिस आर व्हाट राइट सम इंफॉर्मेशन दैट आई वांट टू पास टू प्रोविजन माय इंस्टेंस. तो वो मैं कहाँ रखूंगा, तो वो मैं कहाँ रखूंगा, अपने एक वेरिएबल फाइल में रखूंगा कि मुझे इस रीजन में बनाना है, ये मेरा राइट इंस्टेंस का इमेज होना चाहिए, वेदर आई वांट टू क्रिएट अ यूबुंटू मशीन और रेड हैट मशीन राइट. तो सारे इन्फॉर्मेशन आप एक वेरिएबल फाइल में स्टोर करोगे. आप उसको कोड में नहीं डालोगे, हार्ड कोड नहीं करोगे, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप हार्ड कोड करोगे आपको कुछ चेंज करना पड़ेगा तो कोड में आके चेंज करना पड़ेगा. लेकिन अगर आपको कोई वैल्यू चेंज करनी है तो आप कॉन्फिग फाइल में चेंज करके आपके कोड को रन करते हो, वो वहीं से उठाने वाला है राइट. यू गॉट राइट राजीव? दिस इज व्हाट बेसिकली यू आर एक्सपेक्टिंग राइट. Yes, yes, yes. दीपक, अगर config फाइल में मैं कोई वैल्यूज डिफाइन नहीं करती हूँ जैसे कि रीजन हो, तो जब हम यहाँ पे Ansible रन करते हैं प्लेबुक, तब वहाँ पे वो बाय डिफॉल्टली उससे पूछना चाहिए ना कि कौन से रीजन में करना है, या फिर नहीं, वो Ansible ऐसा नहीं पूछता. ठीक है, अगर आपने मान लो कोड में डाला है मतलब यूज किया है और आप पास नहीं कर रहे हो, है ना, तो Ansible क्या करता है, Ansible के पास दो ऑप्शन है, इधर आपका स्टैंडर्ड वेरिएबल फाइल्स है वहां से जाके रीड करेगा, अगर वहां नहीं है तो एक डिफॉल्ट वेरिएबल फाइल है वहां से रीड करेगा. दोनों में नहीं मिलेगा तो आपको एरर दे देगा कि वेरिएबल नॉट डिफाइंड. okay Okay, means we have to give हाँ, different. so if you are comparing with right CloudFormation or Terraform, right, generally in CloudFormation Terraform they do what, They if they will don't ask. find any value they will ask right. So it is Hmm. not here okay in Ansible. Okay, now first of all the concept or use case of static inventory is clear or not? Hello everyone, क्योंकि प्लेबुक में हम यूज करेंगे राइट, स्टैटिक इन्वेंटरी यूज करेंगे, बट अभी आपको समझ में आया कि हाउ आई एम एबल टू इंटरेक्ट विथ माय रिमोट मशीन एंड रन एड हॉक कमांड्स देयर, है ना, यूजिंग द मॉड्यूल्स, डिफरेंट मॉड्यूल्स. जैसे हमने अभी कमांड देखा, पिंग देखा, एपीटी भी देखा, है ना. एपीटी के थ्रू हमने रिमोट मशीन पे राइट इंस्टॉल कर दिया. अगर मान लो वही मुझे रेड हैट में अगर एचटीटीपीडी इंस्टॉल करना है तो मैं कैसे करूंगा, तो ऑब्वियसली मेरा मॉड्यूल नेम क्या हो जाएगा, एपीटी की जगह यम हो जाएगा, और पैकेज नेम क्या हो जाएगा, नेम की जगह httpd. और रिमेंबर जो ये फ्लैग है ना -b बिकम यूजर रूट राइट, ये
2.0 वर्जन के स्पेसिफिक से पहले वी जनरली यूज sudo कीवर्ड, राइट? sudo ही यूज करते थे. नाउ sudo has been deprecated and right it has become what flag called become user. In playbook also we will be using right become user as a key, right? Not become user, only become as a key. इतना पार्ट हम यूज करेंगे अपने प्लेबुक में, राइट? और उसके आगे हम बताएंगे किस यूजर से राइट हम चेंज होके कमांड रन करना चाहते हैं, राइट? तो जनरली इन आवर केस अपाचे इंस्टॉल करने के लिए हमें रूट एक्सेस चाहिए था, तो हमें बिकम यूजर यूजर नेम क्या दिया, रूट दिया, ठीक है? सो दिस इज राइट बेसिकली कमांड एडहॉक कमांड एग्जीक्यूशन. कई बार हमें एडहॉक कमांड की भी जरूरत पड़ती है कुछ राइट क्विक ऑपरेशंस करने के लिए. मुझे कुछ क्विक फिक्स करना है, राइट? सेट ऑफ 100 मशीन, राइट? And I just need to run one command, right? और change से operating system का कुछ right tweak करना है, तो मैं एक बार verify करके क्या करूँगा, एक ये script लिखूंगा और जितने भी servers हैं उनमें right run कर सकता हूँ. तो वहाँ पे ad hoc commands ज़्यादा useful हैं, right? Rather than maintaining your infrastructure, जहाँ पे आप state maintain करने की कोशिश करोगे, वहाँ पे आपको ad hoc commands useful नहीं आएंगे, जो Ansible ad hoc commands हमने अभी देखे. And that's the reason, right, that we were seeing right change और उसका desired state okay हमें दिख ही नहीं रहा है, okay का कुछ fundamentals ही नहीं आया. That is the reason behind that. Okay. Now let's jump to right another type of inventory called dynamic inventory. And मैंने क्या बोला, dynamic inventory क्या है? Dynamic inventory is what? A script. एक script होना चाहिए ना? So let's move back to and create a directory called dynamic inventory. cd dynamic inventory. अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे? For our learning purpose, there is a very popular script, right, which is written right in Python. Similarly, OpenShift में आप काम करोगे उसके लिए भी बनाया हुआ है, right? तो ये ec2.py जो स्क्रिप्ट है, right, ये आप इंटरनेट में जाके कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो, right? और उसको हम इन्वेंट्री की तरह यूज करेंगे क्योंकि वो रिटर्न करता है हमें क्या, हमारे AWS जो मेरा AWS अकाउंट है जिसपे मैं कुछ एक्शन करना चाहता हूँ, राइट? तो वो बोटो लाइब्रेरी यूज करके उन सर्विसेज को एक्सेस करके, राइट, can give you all the information related to your EC2 compute, right? Right, all the details to you. So that is what, right? First we will understand कि वो ec2.py script करता क्या है, and then how we can use with our Ansible ad hoc command, right, the dynamic inventory to do certain action. जैसे अभी हमने कमांड रन किए, राइट? सिमिलरली डायनेमिक इन्वेंटरी से भी मैं चेक करना चाहता हूँ सेम चीज, राइट? रेदर देन यूजिंग स्टैटिक इन्वेंटरी, हाउ आई कैन डू दैट? ऑब्वियसली फर्स्ट आई नीड टू राइट डाउनलोड दैट स्क्रिप्ट व्हिच इज प्री रिटन. तो here, right, in this my documentation I have this URL through which I can right download it. पहले मैं इसको Python script को डाउनलोड कर रहा हूँ, ये डाउनलोड हो गया, ठीक है? अगर if you see I have one ec2.py script, right? Similarly ये इसका configuration file है, right? INI are generally what? INI configuration, INI extension कब use करते हैं? Anyone? It is generally right when we require to right run our ec2.py, so we need some right initiator or driver, right, to run for ec2.py. So again it is like a code config separation. So ec2.ini will right have all the information that ec2.py want to fetch and run, right? कब वो execute कर रहा है तो सबसे पहले जाके वो ec2.ini में check करेगा कि भाई मेरे को authentication के लिए जो keys चाहिए वो यहाँ पे हैं कि नहीं. तो मेरे INI में configurations हैं, right? वो configurations को use करके ec2.py run करता है. It is yet another configuration file, but generally they act as a driver for the ec2.py script. Okay. Now, if I see right ec2.py एक Python script है तो obviously मुझे इसको execute permission देना पड़ेगा, है ना? chmod 755. और इस कोड को अगर हम देखें ec2.py को जाके, तो सबसे पहले राइट यू कैन सी ये क्या कर रहा है, आइडेंटिफाई कर रहा है कि इस इन्वायरमेंट पे कौन सा पाइथन वर्जन है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे स्क्रिप्ट मेरे मशीन पे ये कमांड सही चलेगा कि नहीं चलेगा? एनीवन? क्या क्या देगा? ये एरर देगा कि सक्सेसफुल होगा? एरर हाउ यू विल आइडेंटिफाई? 3.8. क्योंकि मैंने कोई सॉफ्ट लिंक ऐसा सेट नहीं किया है जो कि राइट कोई पाइथन करके राइट देगा. फॉर एग्जांपल अगर आप इसको इंटरप्रेट करो तो ऐसे कर सकते हो, अगर मैं यहाँ पे पाइथन -v करूंगा तो क्या बोल रहा है? पाइथन नॉट फाउंड.
इसी तरह अगर यूजर बिन env अगर मैं पाइथन करूंगा तो क्या बोल रहा है, नो सच फाइल और डायरेक्टरी। अगर वही मैं पाइथन 3 करूंगा तो आई एम एबल टू कनेक्ट, राइट। तो मुझे मेरा इंटरप्रेटर मिल रहा है। तो इसलिए मेरा जो पहला लाइन है, आई हैव टू चेक कि भाई वो एक्चुअली पॉइंट कर रहा है क्या करेक्ट, राइट, पाइथन पॉइंटर पे। जनरली दिस आर नथिंग बट शॉर्टकट्स ना, पाइथन 3 शॉर्टकट जो आपकी यूजर बिन में पाइथन एक्चुअल पाइथन को राइट पॉइंट कर रहे होते हैं। तो हमारे केस में बाय डिफॉल्ट पाइथन 3 क्रिएटेड है, पाइथन क्रिएटेड नहीं है ना। दो तरीके से मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ, या तो मैं स्क्रिप्ट में जाके पाइथन की जगह पाइथन 3 लिख दूँ, और दूसरा क्या कर सकता हूँ मैं, एक शॉर्टकट बनाऊँ पाइथन जो कि किसको पॉइंट कर रहा हो, पाइथन 3 को। तो मेरा ये काम करना लग जाएगा। तो अगर मैं स्क्रिप्ट में कुछ चेंज नहीं करना चाहता, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, cd यूजर बिन में जाऊँगा, ठीक है, यहाँ पे ls-ltr पाइथन स्टार करूँगा, ठीक है, एंड आफ्टर दैट व्हाट आई विल डू, आई विल क्रिएट अ शॉर्टकट ना, sudo ls python 3, ln हाँ, and it should be a soft link, so minus s flag, okay, python 3, और किसको बनाऊंगा मैं, पाइथन को, है ना, डन। नाउ अगर मैं वापस से करता हूँ तो आपको दिखेगा पाइथन 3 को पॉइंट कर रहा है, राइट। अभी मैं अगर वही कमांड रन करूंगा जिसके लिए बोला था पाइथन नॉट फाउंड, राइट, अभी नहीं आएगा, अभी आई एम एबल टू लॉग इन टू, राइट। सो आई कैन सॉल्व दैट इशू, राइट, लाइक दिस। अगर वो इस तरह का कुछ इशू आ रहा है, यूजर बिन env यूज है और वो लाइन में प्रॉपर राइट पॉइंट नहीं किया, तो ऑब्वियसली यू हैव टू करेक्ट इन दिस वे, ठीक है। नाउ अगेन लेट मी जंप टू दैट स्क्रिप्ट। तो अगर ये स्क्रिप्ट देखो, इसके सारे डिस्क्रिप्शन पहले ही लिखा हुआ है, राइट। इट्स एन एक्सटर्नल इन्वेंटरी स्क्रिप्ट, राइट। और इसको क्या चाहिए, एक्सेस की, सीक्रेट की चाहिए। क्यों चाहिए, ऑब्वियसली एडब्ल्यूएस अकाउंट से कनेक्ट होने के लिए। आप कहाँ से रीड कर सकते हो, उसने बोला आइदर यू कैन गो एंड रीड इट फ्रॉम EC2 INI और यू कैन राइट डिफाइन अ वेरिएबल डायरेक्टली, राइट, लाइक एक्सपोर्ट एक्सेस की इन योर सिस्टम। सो वो इसको यूज करेगा बेसिकली, राइट, ये चाहिए उसको। और डिटेल्स हैं कि ये क्या क्या कौन कौन से सर्विसेज के बारे में डिटेल लाके देता है, राइट, सब कुछ मेंशन किया हुआ है। और एट द एंड, राइट, जहाँ पे स्क्रिप्ट स्टार्ट होगा, यू विल अंडरस्टैंड, राइट, इट इज यूजिंग, राइट, this kind of libraries, right, automation किया हुआ उन्होंने from boto import, right, EC2, and obviously EC2 के जितने भी right functionalities हैं using boto, right, it can मतलब describe EC2, right, whatever related to configuration related to EC2 it can fetch, and उससे related code ही नीचे में लिखा हुआ है, right, कि जितने भी इंफॉर्मेशन है और वो आपको रिटर्न देता है एक जेसन आउटपुट जिसमें वो सारे डिटेल्स रहते हैं। दिस इज द कोड, राइट, हाउ टू talk to EC2 service, right, and get the information about the services and display to the user. At the end, यही इस पूरे स्क्रिप्ट का राइट एंड गोल है, ठीक है। नाउ इफ आई रन दिस स्क्रिप्ट, राइट, I might get right an error related to right various libraries। तो सबसे पहले तो मुझे क्या होगा, लाइब्रेरी रिलेटेड एरर्स आ सकते हैं। जैसे अगर मैंने ec2.py रन किया, ये क्या बोल रहा है, मॉड्यूल नहीं है का, बोटो मॉड्यूल नहीं, और वो बोटो यूज कर रहा है, बोटो एंड बोटो 3 यूज कर रहा है। तो वी हैव टू डू व्हाट, वी हैव टू इंस्टॉल दैट ना। तो हम लोग क्या करेंगे, sudo pip3 इंस्टॉल बोटो एंड बोटो 3 दोनों ही डाल देते हैं। ओके, नाउ इफ आई रन अगेन, अभी देखो ये जो इशू आ रहा है, राइट, EC2 utils का, this is specific, right, to because of the version, right, of right Python we are using, right, and we have to fix like fixing this ansible dot module utils। ये हमें इस पैकेज को डालना पड़ेगा जो कि इस इंस्टॉलेशन के कारण आ रहा है, जो हमने pip3 से राइट एंसिबल इंस्टॉल किया। अगर ये इंस्टॉलेशन अगर मैंने नॉर्मल इंस्टॉलेशन किया होता, राइट, एंसिबल का, तो आई माइट नॉट हैव फेस दिस इशू, राइट। सो दिस इज द मेजर प्रॉब्लम एरिया, राइट, व्हेन यू आर इंस्टॉलिंग यूजिंग pip3। तो ये इस तरह के प्रॉब्लम आएंगे। To get rid of this, either you have to fix, right, of your instance, right, after right installing this, right, basically module utils जो ansible के साथ आपको डालना पड़ेगा। So it's better, right, move to what, move to the right proper installation rather than right this pip3 installation। इससे बाहर आने का यही तरीका है। तो हम क्या करेंगे, uninstall मारेंगे sudo pip3
remove, okay, Ansible, uninstall. इसको रिमूव करके वी विल डू द नेटिव इंस्टॉलेशन, राइट? क्योंकि ये मॉड्यूल डिटेल्स अगर फिक्स करने जाओगे तो आपको उसके डिपेंडेंसीज फैच कर करके फिक्स तो कर लोगे, लेकिन इट विल टेक लॉट ऑफ राइट एफर्ट एंड टाइम टू सेव दैट, राइट? वी विल मूव टू अ नेटिव इंस्टॉलेशन वेयर वी विल नॉट सी दिस इशू. हमारा नेटिव इंस्टॉलेशन कमांड है, हम डायरेक्टली sudo apt install ansible मार सकते हैं, क्योंकि बाकी तो हम कोई तो भी मीटिंग के लिए वेट कर रहा है, ज्वाइन करो ना उसे. कौन है? प्रियेश. Okay, yeah. So this one, right, we have to run this commands. इसको रिमूव करने दो, थोड़ा टाइम लेगा ये. Oh my bad. Yes. Okay, it is uninstalled now, right? Let me. Okay, and let me add this Ansible PPA. Then install Ansible. Now it is installing Ansible here. Okay. Now we have Ansible, native Ansible installed. Okay. Now if we run this ec2.py script, right? What happened? Syntax of this. WhatsApp is not. Software. ये एरर नहीं आना चाहिए था अभी. ठीक है, लेट्स फिक्स दैट एरर नाउ. ऐसे नहीं आना. एंसिबल अगर आप एडहॉक इंस्टॉल करोगे तो नहीं आएगा, आई थिंक बिकॉज ऑफ सम रेमिनेंट्स, राइट? आई एम फेसिंग दिस. सो ये क्या बोल रहा है? एंसिबल मॉड्यूल utils import ec2 as ec2 utils and cannot import name ec2 from Ansible. ठीक है, वो लेते हैं और इसका मॉड्यूल utils को इंस्टॉल करने का, फिक्स करने का देखते हैं. It will take some time, guys, for sure. Let's do that. It's a common problem, but generally with the right default native installation, it should not have come. I think कुछ remnants रह गए, तो उसके कारण वो आ रहा है. So if I comment out model, but this is not the solution. कि script में जाके ये वाला जो line है ना, इसको comment कर दिया तो चल जाएगा.
तो हमने Ansible is available, that is fine, but this is not, we want module details. Deleted Ansible which was installed with Brew and installed it with pip. That did the trick and everything works as expected now. So again it's saying right Python 2 पे run करो, but हमें Python 2 पे run नहीं करना है, Python 3 पे ही this one, let's check. This is the same ec2.py script. यहाँ पे भाई को कुछ इशू आया होगा. Okay. Module details import. Let's see this one. This is don't want, ये को भी कहीं से इसने भी उठा के लेकर आया हुआ है. क्या है? To hear that it's not a bug. Is this something I figure out cause it by hand installing Ansible with Brew made Ansible unable to my Python interpreter. So from Ansible module to import C2. Introduce this. We need this ना, इसको हम कमेंट तो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, but चलना चाहिए with this right implementation also it has run for me. नो, हर जगह इसको ही कमेंट करने बोला हुआ है इन्होंने, बट ऐसा नहीं करना है. Talks regarding time do not include. Okay, let's do one thing. Again I will do pip3 uninstall, पर देखते हैं उससे प्रॉपर इंस्टॉल अनइंस्टॉल हुआ कि नहीं हुआ, वो मैं एक बार चेक करता हूँ. ठीक है. So it has also found existing installation Ansible 2.9.6 not installing, uninstalling. Okay, तो no files. फिर तो अभी हमारा वर्जन क्या है? ये 2.9.6 क्यों दिखा रहा है Ansible? हमारा Ansible वर्जन अभी भी हमें राइट 2.11.0 दिखा रहा है, जबकि हमारे 2.9.6 दिखाना चाहिए था. इसका मतलब प्रॉपर वे में रिमूव नहीं हुआ है. ठीक है, दैट इज द मेन प्रॉब्लम. सो the reason right why it was not working after cleaning up. What I will do, I will first remove sudo apt remove Ansible. That what we have to fix, right? 2.9.6 आना चाहिए, वो pip3 वाला दिखना नहीं चाहिए वर्जन. ठीक है, तो अभी मैं वापस से इंस्टॉल ये करता हूँ अनइंस्टॉल Ansible. ये बोल रहा नहीं है, but we have some remnants, right? So remnants in terms of this usually Python 3 test packages or
This package is Ansible. I will remove this. Okay. So copy and sudo. एक बार Ansible वर्जन करके मेरे को देखने दो क्या है Ansible dash वर्जन, कुछ नहीं आ रहा, अभी ये दिखा रहा है. That is the problem. अनइंस्टॉल कर दिया है फिर भी वो दिखा रहा है ना. sudo Ansible dash version, so user local bin Ansible, no model named Ansible. ठीक है, नहीं दिखा रहा है. I will remove this Ansible also, user local bin Ansible. Okay, sudo rm minus f user local bin. Okay, अभी प्रॉपर क्लीन हुआ है. ठीक है, अभी हम करेंगे sudo apt install. And Ansible version check करेंगे, it should not show us 2.11.0, right? So pip3 से, and that has a problem, right, with related to module utils. अभी हमारा Ansible version, yeah, it is showing right now correct one. ठीक है, अभी हमारा fix हुआ है वो problem. अभी हम ec2.py रन करके देखते हैं. अभी जो एरर आ रहा है दैट इज फाइन, राइट. अब वो हम उस वाले जो मॉड्यूल एरर से हम लोग बाहर आ गए, क्योंकि राइट जो नेटिव इंस्टॉलेशन है, राइट, उसके पास फिक्स है, राइट, फॉर दैट मॉड्यूल डिटेल्स, और वो डालता है वो प्रॉपर, राइट, पैकेज जो एंसिबल का पैकेज इंस्टॉल करता है, राइट, उसमें वो हैंडल्ड है. यू गॉट द सॉल्यूशन नाउ गाइस, एवरीवन? क्या प्रॉब्लम था? यस और नो? Yes. प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम ये था कि अगर हम pip3 से एंसिबल इंस्टॉल करते हैं तो एंसिबल के अंदर एक मॉड्यूल है, एंसिबल एज अ पैकेज है, ठीक है, उसके अंदर एक मॉड्यूल यूटिल्स करके एक पैकेज है. जो मॉड्यूल यूटिल्स है, राइट, वो हमारा कोड यूज कर रहा है EC2 से बात करने के लिए. दो फॉर आवर लैब, डायनेमिक इन्वेंटरी लैब, दैट is not important. If we comment that line also, right, in the code, our lab would have successfully done. But problem is that is not a proper installation. प्रॉपर इंस्टॉलेशन क्यों नहीं है? अगर मुझे फटाफट कुछ चीजें करनी है, राइट, मैंने एंसिबल से, राइट, pip3 से इंस्टॉल कर दिया, राइट, इवन आई कैन रन माय प्लेबुक विद दैट. ऐसा नहीं कि प्लेबुक भी रन नहीं हो सकता, प्लेबुक भी रन हो सकता है उससे. बट देयर आर फ्यू चैलेंजेस लाइक योर एंसिबल कॉन्फ़िगरेशंस, एंसिबल डिफॉल्ट इन्वेंटरी, यू हैव टू क्रिएट योर ऑन व्हेन यू डू pip3 इंस्टॉल. वो सब बनते नहीं है. जब आप नेटिव इंस्टॉल करते हो तो बाय डिफॉल्ट अभी etc एंसिबल में आपको आपके होस्ट और एंसिबल कॉन्फ़िग फाइल दिखेंगे, वो नेटिव इंस्टॉलेशन आते हैं. pip3 is a right installation of Ansible is a quick way, right, and right setting up things. But due to certain right problem with this ec2.py script, सिर्फ एक ही चीज के साथ ये प्रॉब्लम है, बाकी किसी के साथ नहीं है. तो वहाँ पे वो मॉड्यूल यूटिल्स का जो पैकेज है वो ब्रोकन है, राइट. तो ब्रोकन है क्या? वो प्रॉपर पैकेजिंग में वो डाला नहीं हुआ यूटिल्स. तो आपको या तो एक्सप्लिसिटली उसको फिक्स करना पड़ेगा, आपको खुद से डाल के, राइट, वो इंस्टॉलेशन उसका आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मॉड्यूल यूटिल्स में कैसे पैकेज डालूं, राइट. ओवर दैट वो उस तरीके से फिक्स होता है. उसके बहुत सारे डिपेंडेंसी, जैसे मैंने बोला, वो फिक्स होगा, आप ढूंढोगे, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, और वो उसको भी आप वर्किंग स्टेट पे लेकर आ सकते हो, मतलब फॉर दिस पर्टिकुलर, राइट, यूज केस ऑफ ec2.py. but Ansible native installation, right, has identified the solution, right, for module utils, and it gives that package, right, right, with its installation. तो दोनों में ये फर्क है. दोनों, राइट, इवन सेम वर्जन ऑफ 2.96 ऑफ pip3 इंस्टॉलेशन अगर आप करोगे तो उसमें प्रॉब्लम है, इसमें नहीं है. दैट इज द राइट मेजर डिफरेंस. ठीक है, अभी ये बता सकते हैं ये एरर क्या है? कोई, ये मैंने ec2.py रन किया, व्हाट कुड बी द एरर? ये एरर को पढ़ के आप क्या आइडेंटिफाई करते हो? एट द एंड में किस एंटिटी से बात करने जा रहा हूँ? ec2.py कहाँ पे जा रहा है, कहाँ पे क्या करने जा रहा है? ये EC2 से ऑथेंटिकेट करने के लिए क्रेडेंशियल्स नहीं दिए, एक्सेस. हाँ, बेसिकली, राइट, EC2 तो वन ऑफ द सर्विस है, राइट, जो राइट AWS में, ऑब्वियसली ये AWS के साथ ऑथेंटिकेशन चाहता है ना, बोटो लाइब्रेरी, है ना, कि मैं आई वुड शुड बी एबल टू, राइट, लॉग इन, राइट, एज अ प्रॉपर ऑथेंटिकेशन, आई हैव सर्टेन परमिशन टू डू सर्टेन एक्शन, करेक्ट. तो ऑब्वियसली इसको चाहिए क्रेडेंशियल, एक्सेस की और सीक्रेट की, जो हम लोग ने उसके स्क्रिप्ट के इनिशियल पे देखा था. तो लेट्स गो
and right, go to account, go to IAM. दीपक, ये अगर हम EC2 के अलावा क्लाउड पे अगर नहीं करते और ये हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर करते तो ऑब्वियसली आपको दो चीजें, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था ओपन शिफ्ट बोल के, है ना। ओपन शिफ्ट जनरली क्या है, जैसे VMware ओपन शिफ्ट क्या है, ये ऑन प्रीम में जनरली यूज करते हैं, राइट। अगर आपने उससे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया है तो ऑब्वियसली आपके पास एपीआई होंगे। अगर एपीआई होंगे तो आप उस एपीआई पे क्या लिख सकते हो, स्क्रिप्ट्स लिख सकते हो। लेकिन अगर आपका खुद का डाटा सेंटर है जिसके कोई सर्विस एपीआईज नहीं है, राइट, और कुछ नहीं है, तो ऑब्वियसली आपके लिए डिफिकल्ट होगा डायनेमिक इन्वेंटरी यूज करना, है ना। या तो आप एपीआई बिल्ड करोगे कि सो दैट यू कैन गेट योर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्फॉर्मेशन, राइट। बट विशाल, एट द एंड एक क्या है, पब्लिक क्लाउड के साथ इशू यूज करना इजी क्यों है, क्योंकि वो क्या है, जनरली उनके जितने भी सर्विसेज हैं एपीआई बेस्ड है ना। यस मैं अपने स्क्रिप्ट में लिख के उसको फैच कर सकता हूँ। अगर आपके डाटा सेंटर में आपकी खुद के राइट प्राइवेट क्लाउड में, राइट, या आपके खुद के डाटा सेंटर के लिए भी सर्विसेज में एपीआई बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन किया है आपने, तो वहां पे भी आप यूज कर सकते हो। आपको बस उसके लिए क्या लिखना पड़ेगा, कोड लिखना पड़ेगा। यस ठीक है, अभी आई एम गोइंग टू क्रिएट वन यूजर। इसका नाम मैं एंसिबल ही रख देता हूँ। एंड गाइस, आई एम गिविंग प्रोग्रामेटिक एक्सेस, अगेन आई विल से डोंट show these credentials, right, to anyone or share with anyone, right. It will if someone, right, shared it in open, right, internet, गलती से कमिट कर दिया, कुछ कर दिया, तो आपको आपके अकाउंट पे राइट इशू होगा। जैसे अभी मैं आपको शो करने के लिए तो कर रहा हूँ, बाद में इस यूजर को हटा दूंगा, ठीक है। तो बी वेरी केयरफुल, राइट, विद दिस एक्सेस की आईडी एंड सीक्रेट की आईडी, राइट। इट शुड नॉट बी मिसयूज्ड, ओके। तो अभी right, I'm attaching existing policy, right. I'm giving administrator access, full right to this user, right, Ansible user जो मैंने create किया, and will create this user. So obviously this is my access key ID, so मैंने copy किया और टाइम बिंग कहाँ गया, मेरा डायनामिक क्रिटिकल ऐप, ठीक है। यहाँ पे मैंने इस वेरिएबल में यहाँ पे मैंने डाल दिया। Similarly, I will copy my secret access key और इसको मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। Now I have my access key, secret access key ID in place, so I can write directly set this variable in my terminal. Obviously मैं तो वन टाइम कर रहा हूँ, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में करोगे तो आप कहीं पे इसको राइट AWS कॉन्फ़िगर करके, राइट, एक डिफॉल्ट प्रोफाइल सेट करोगे और वहां पे सेट करोगे इसको, राइट, कि आपका ये वेरिएबल सेट हो, या INI स्क्रिप्ट के अंदर इसको स्टोर करोगे, जो INI EC2.ini है, राइट, वहां पे भी डाल सकते हो आप। तो मैंने इसको अभी टर्मिनल पे डाल दिया, राइट। तो अभी मेरे ये एक्सेस की आईडी और सीक्रेट एक्सेस की, राइट, मेरे इस टर्मिनल सेशन पे, राइट, वैल्यू सेट है। अभी मैं अगर ec2.py रन करूंगा, इट्स टेकिंग टाइम, मींस क्या हो रहा है, कुछ एग्जीक्यूशन हो रहा है, ऑथेंटिकेशन हुआ है, राइट। अभी वो क्या कर रहा है, वो सारे एपीआई सर्विसेज से डिटेल फेच करके ये मुझे जेसन आउटपुट देगा, जिसमें आई हैव ऑल द डिटेल्स, राइट, रिलेटेड टू माय कंप्यूट। तो मेरे कितने मशीन्स हैं, उनके क्या आईपीज हैं, राइट, क्या टैग है, राइट, वो सारी इंफॉर्मेशन मुझे मिल जाएगा। नाउ यू सी, राइट, दिस आउटपुट, राइट, दिस ec2.py जनरेट्स। तो अभी देखो मेरा कौन कौन से मशीन, एंसिबल मास्टर मशीन है, उसका ये आईपी है, राइट। फिर मेरा एक मशीन है जिसका टैग नेम db01 है, तो टैग नेम रिलेटेड, राइट, इन्फॉर्मेशन। सो दिस आर स्टैंडर्ड, right, which is used by dynamic inventory, this naming convention like tag name and all that, right. तो ये पूरे डिटेल, राइट, कौन सा AMI यूज किया मैंने, राइट, किस होस्ट के लिए कौन से AMI आईडीज हैं, वो सारे डिटेल्स आपको दे सकता हूँ। तो आप यू कैन सी, राइट, फॉर डिफरेंट अदर ऑटोमेशन पर्सपेक्टिव दिस स्क्रिप्ट इज सो मच यूजफुल, राइट, ऑफ द क्लाउड। एंसिबल तो यूज कर ही रहा है डायनेमिक इन्वेंटरी के लिए, बट आप दूसरे ऑटोमेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको सीक आउट कर सकते हो, राइट। तो इसने मुझे ये आउटपुट तो दिया, अभी मैं इसको एंसिबल के साथ कैसे यूज करूंगा, ठीक है, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो I'm copying a very basic command first, right? Just say ping करने के लिए, ठीक है। जैसे ping का pong हमने किया था, वही डायनेमिक इन्वेंटरी से हम कैसे कर रहे हैं और उसको समझते हैं पहले। तो अभी इस कमांड में कुछ करेक्शंस हैं, ठीक है। तो अभी मैंने मान लो पिंग यहाँ तक ऐसे लिखा, यूजर हटा दिया। सबसे पहले मैंने क्या किया, एंसिबल एडहॉक कमांड है अभी,
no playbook, right? Ansible ad hoc command. Minus I is what? Minus I is what? Inventory file, right? तो हम फाइल नेम पास करते हैं, राइट? यहाँ पे हमने क्या पास किया इसको? Script means it is a dynamic inventory, है ना? Script is what? A dynamic inventory in case of Ansible. If I'm using inventory, which is a script, then it means it's a dynamic inventory. Now, this tag name is what? Host name from that script. It's a standard convention. So ec2.py, right? के पास में एक आर्गुमेंट पास कर रहा हूँ टैग नेम, राइट? वो क्या कर रहा है? वो एक तरह का फिल्टरिंग लगा के रखा है कोड में. अगर आप ec2.py को अगर कोई टैग नेम दे रहे हो, बेसिकली इट इज समथिंग अ टैग दैट यू हैव गिवन टू योर होस्ट. फॉर एग्जांपल, अगर आप मेरा इंस्टेंस देखोगे, अगर मैं ec2 सर्विसेज में आता हूँ, तो मैंने टैग दिया ना, वेब होस्ट को क्या web01 दिया है, db को db01 दिया है. तो दिस आर माय नेम टैग्स बेसिकली, है ना? ये जो है web01, db01, ये क्या है? These are name tags. तो यहाँ पे क्या है? देखो, टैग विच की इज व्हाट? नेम. तो उसकी जो वैल्यू यहाँ पे पास करोगे वो उसको उसके लिए फिल्टर करेगा ec2.py. तो अभी हमारा क्या है? इंफॉर्मेशन पुल कर रहे हैं. हाँ, अगर मान लो मैं web01 को राइट इंटरेक्ट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ? web01 मैंने पूरा का पूरा नाम दिया. अगर मान लो मेरे ऐसे वेब करके मल्टीपल मशीन है 01, 02, 03, तो मैं क्या कर सकता हूँ? वेब स्टार. तो वेब से जितने भी मशीन स्टार्ट हुए हैं, वेब जो भी जितने भी मशीन है जिनका टैग नेम वेब से स्टार्ट होता है, वो सबके लिए क्या करेगा? पिंग करने की कोशिश करेगा, राइट? उसको मतलब इन्वेंटरी के जो मॉड्यूल है जो आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो, वो मॉड्यूल को एग्जीक्यूट करेगा. तो अभी हम पहले वेब 01 के लिए करके देखते हैं. ऑब्वियसली ऑथेंटिकेट कर रहा है, ट्राई कर रहा है कनेक्ट करने के लिए, राइट? टैग नेम से उसने जो भी फिल्टर करके उसको जो डिटेल मिलेगा, आईपी मिलेगा, राइट, वेब 01 का, उसको वो पिंग करेगा. इट्स टेकिंग सम टाइम. सो उसने देखो आइडेंटिफाई किया ना सक्सेसफुली, यही आईपी है अपने वेब 01 का, राइट? 231.24, ठीक है? उसको आइडेंटिफाई किया और was able to communicate with using this dynamic inventory, ठीक? अगर मान लो मैं वेब स्टार करता हूँ, star is nothing but, right, a wild character which is, right, a kind of a globing character, right? It is searching, right, anything which, right, starts with web. तो ऑब्वियसली अभी हमारे मेरे जो जिसके लिए मैंने ये क्रेडेंशियल किया है, मेरे पास हार्डली 4 या 5 मशीन ही है, राइट? और उसमें सिर्फ एक ही मशीन है जिसमें, राइट, वेब 01 है, तो उसने वेब स्टार से भी वही आइडेंटिफाई किया. सिमिलरली मैं डीबी के लिए कर सकता हूँ, है ना? डीबी के लिए ये क्लियर हुआ हाउ डायनेमिक इन्वेंटरी इज वर्किंग. Now you can, right, segregate, right, a difference between static inventory and dynamic inventory, everyone. Yes or no? Yes. Okay, now let's run, right, some specific installation commands, right, which I have, right, placed, and do yourself also, right, for, right, hands on. So यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे मैंने कुछ राइट कमांड लिखे हैं. इसमें मैंने सिचुएशन ऐसा रखा है कि आवर क्लाइंट कुड बी रेड हैट और यूबुंटू. जैसे मेरा मास्टर कुछ भी हो रहा है, चाहे यूबुंटू हो, चाहे, राइट, वो रेड हैट हो या यूबुंटू, डजंट मैटर, बट अपना क्लाइंट अलग अलग होना चाहिए. तो उसके लिए अलग अलग यूज केस, राइट, एग्जीक्यूशन के लिए. फॉर एग्जांपल मैंने एनजिंग्स इंस्टॉल करना है, राइट, रिमोट मशीन पे. तो अगर मैं रेड हैट पे कर रहा हूँ तो मैं क्या यूज करूंगा? यम कमांड, राइट. नाउ रिमेंबर दैट दिस, राइट, आर टू वे टू डू इट. एक तो क्या है, आप ये आरपीएम वाला वे से इंस्टॉल कर सकते हो नेम में. नहीं तो आप क्या करते हो, इसको चेंज करके, अभी एनजिंग्स करके भी पैकेज है. जब ये लैब मैंने क्रिएट किया था तो देयर वाज नो नेम एनजिंग्स पैकेज आउट देयर, तो वी यूज्ड टू, राइट, डू इंस्टॉलेशन यूजिंग आरपीएम. अभी हमारे पास, राइट, है, तो हम क्या करेंगे, यम में नेम एनजिंग्स पास करके भी इंस्टॉल कर सकते हैं. तो हम दोनों इंस्टेंस पे एनजिंग्स इंस्टॉल करके देखते हैं, ठीक है? तो अभी हमारा जनरली ये वाला जो इंस्टेंस है, इस पे हमने अपाचे. हाँ, यस. एक क्वेश्चन था, आपने अभी एंसिबल हाइफन आई और आपने ये जो टैग नेम के साथ आपने क्या दिया, वेब स्टार दिया, राइट? तो वेब से रिलेटेड जितने भी टैग नेम है उसका आपने कोई इन्फॉर्मेशन पूरा यहाँ पे फेच हो जाएगा, राइट? बिल्कुल.
तो यहाँ पे हमने टैग अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर सिर्फ स्टार दिया तो पूरा का पूरा आ जाएगा। सबके लिए करेगा, राइट? ओके। जितने भी इंस्टेंस के नेम टैग हैं सबको वो ढूंढेगा, ठीक है? मतलब है जब हम स्टैटिक इन्वेंटरी से कर रहे थे तो उस टाइम पे हमको एक ग्रुप या फिर ऑल लिखना पड़ता था, जो यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगा, राइट? यस, यहाँ पे हम टैग बेस्ड कर रहे हैं, राइट? नेम बेस्ड, राइट? टैग नेम बेस्ड, राइट? ग्रुपिंग कर रहे हैं, ठीक है? यस। Okay, now let's run this command and I will make some change to it, and then you are going to say that whether it will work or not, or any amendments अगर कुछ issue आता है तो आप बताएंगे क्या कैसे करना है। सबसे पहले तो obviously मैं RPM वैसे move करना चाहता हूँ, right? तो पहले मैंने name डाल दिया engines, ठीक है? ऑब्वियसली मैं रेड हैट मशीन पे कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली मेरा टैग नेम क्या होगा? कौन सा मशीन होगा? डीबी DB. वाला, राइट? हाँ, हम डीबी में हम जाके डाल रहे हैं, तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा DB01, यही है ना DB01? देख लेते हैं, या बी स्मॉल DB01, एंड सी मैंने स्पेसिफिक यूजर डालने के लिए क्या फ्लैग किया है? -u और डैश यूजर इक्वल टू, बोथ आर वर्क सेम, राइट? डैश यूजर इक्वल टू यूजर नेम, और -u then username. -b become user root, we know, we have already used it. We are using which flag, which module? Yum module, right? And we are trying to identify a host, right, with a tag name DB01. In that we are going to do what installation? Nginx, and state is what? Present. So all this present, absent, latest have their own meaning, right? If I use state equal to absent, what does it mean? It will remove. It will remove, right, if nginx is there, right? And obviously present is whatever which is presently used, or you can say the stable version, generally. So this will come into present. Latest will always pick up the latest version. And there is something also related to cache, so basically before installing, if you want to do update, for example, if I go to module yum module, in my Ansible module documentation. Let me remove this. Right here, if I go to yum module, back. So argument has all the definition, which you will see, which we are talking about. I'm specifically talking about update cache. This one, update cache. So if you put update cache, what is that? Force yum to check if cache is out of date and re-download if needed. Means it is like running yum update command, right? So there are two choices, right? Either you do update cache equal to yes, or update cache if you don't want to do an update, right? It depends upon you. Let's try this first. So obviously we first check in our remote दीपक, Red Hat machine whether this Nginx, yes, I'm coming, Vishal, just give me 1 minute. पहले यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे Nginx install है कि नहीं है, ठीक है? तो ps aux pipe grep Nginx, और Nginx default port is 80, right? तो यहाँ पे Nginx अभी इंस्टॉल्ड नहीं है, ठीक है? यस विशाल, दीपक, ये हमको यहाँ पे डैश डैश बिकम डैश यूजर इक्वल्स टू रूट ऐसा देना ही पड़ेगा क्या? क्योंकि हमने यहाँ पे डैश भी दिया है ऑलरेडी। see basically not necessary, right? These both options are same, right? Either you use -b space root, or dash dash become user equal, same. I mean to say, -b is an one option, right? Like, so not required, right? Both the flags at the same time. Okay, you can give only one flag also. Got it, Vishal? यस दीपक। Yeah. Now if I run it, obviously it will basically do what, right? Nginx जो भी सर्विस है, उसको वो डालेगा, and then again we have to
see whether what is the status. So it says right there is an issue. So क्या बोल रहा है? No package matching engines found. So that is the reason because of present. कुछ है ही नहीं right, तो हम present use करेंगे तो वो देखेगा कि already जो कुछ है right, उसी के लिए अगर कुछ करना है. So that is the reason right, it failed. So no package matching engines found available, installed or updated. So update cache I think we have to enable right. Update cache जो है वो हमारा missing है, तो हम उसको yes कर देते हैं, ठीक है. And let's see. I will copy this and go to my terminal. Here equal to yes. Now तो ऑब्वियसली जब भी हम राइट नॉर्मल इंस्टॉलेशन भी करते हैं राइट, हम देखते हैं ना आप अपडेट या यम अपडेट मारते हैं. So obviously it brings what the repositories right, refresh the repositories कि वहाँ पे है कि नहीं है. And it was not able to find engines since we have not run right update cache yes, or we have not executed right behind the scene sudo right yum update. So that was the reason right, it was not able to find this package. Now again, why user bin python no package matching engines? Might be Check. the package name is different something. Yeah. Let's check here for engines. Here there are example for engines also. So there's a package name engines. Right? It is there. So I have did some typo or what? Name engines state present. No, there is a package install a list of package right. And if you see right, this is the name engines. Let me check right one more thing. This in the argument state present is also there right. Should this the auto remove option in effect the default action is present. दीपक वहाँ पे प्रेजेंट की जगह पे इंस्टॉल करके देखते हैं. We can use latest also right. But still वो पैकेज का इशू दे रहा है जबकि let me do the state equal to देखते हैं. Okay, let's go to this machine. sudo yum एक बार अपडेट करता हूँ मैं. So it is straight in updated state also. अगर यहाँ पे yum install engines किया क्या हो रहा है? No package. So obviously I think for Amazon AMI right there is no package engines. That is what I can. For Red Hat it is there for right Amazon AMI. So let's use an RPM one right. Let's see whether. So अगर Red Hat में Red Hat 8 में हम करेंगे हमारा Red Hat remote रहता तो I think right उसको engines मिल जाता. ये Amazon AMI में there is no right. Yes. Yeah. Paste it. Let's see this time what happens, whether it is able to right download that RPM or not.
This time RPM thing worked, right? It's able to download, install this RPM, right? But the service is not yet started, right? If you see, for this, you have to basically do yum install engine separately, right? Then only it will basically work. अभी क्या है, उसने RPM लाके रखा है, राइट, डाउनलोड किया है ना? अभी हमें जाके क्या करना है, उस RPM को बेसिकली इन अ वे डिफ्लेट करना है और उसको एग्जीक्यूट करना है, एंड देयरफॉर वी हैव टू डू दिस. बट अगर हम हमारा नेम एनजिंक्स पैकेज चल जाता डायरेक्टली रेड हैट के केस में, देन रिमेंबर यू डोंट हैव टू डू दिस, राइट, इंस्टॉल एनजिंक्स और स्टार्ट सर्विस, राइट, जो भी है सर्विस मॉड्यूल से यूज करके, राइट, उसका सर्विस स्टार्ट करना, वो सब चीजें हम इन वन गो हो जाता. अभी हमें, राइट, मल्टीपल कमांड्स रन करने पड़े एड हॉक कमांड, राइट, अचीव करने के लिए. अभी नाउ वी हैव टू रन दिस कमांड अगेन, राइट, फॉर bringing the service, right, basically installing, and then हमें सर्विस भी अप करना है, राइट, उसका ये सब चीजें हमें करनी पड़ रही है. तो अभी मैं यहाँ पे इसको tb01 करूंगा, टैग नेम, ओके, एंड अभी इंस्टॉल एनजिंग्स होगा बिकॉज आरपीएम आ गया है. और मैं क्या कर रहा हूँ, शेल मॉड्यूल यूज कर रहा हूँ. देखो यहाँ पे इस बार मैंने कौन सा मॉड्यूल यूज किया है, शेल मॉड्यूल. सो शेल मॉड्यूल से भी हम क्या कर सकते हैं, कमांड रन कर सकते हैं, लाइक जस्ट लाइक अ कमांड मॉड्यूल, राइट, दैट इज अ शेल मॉड्यूल आल्सो. So there are different modules, right, you should explore, and rest all looks good. So अभी मैं यहाँ पे install engines कर देता हूँ, and then we can write start sudo systemctl start, right. Let it run. So it has basically, right, done that also, right, installation, right, is also done now, right. तो इसने engines install कर लिया, RPM मिला उसको, उसी से use करके उसने, right, engines भी कर दिया. Still now we do not have, right, a service up and running. अगर हम इसमें जाके, right, sudo systemctl status engines अगर देखें तो it is, right, basically, right, inactive dead state पे है ना. अभी हम इसको, right, यहीं से इसका state भी सही कर देते हैं, right. तो we have to do what, systemctl start. Right, it's changed. Now let's go here and see the status. Now it is active, right, running state in this remote machine. So obviously, right, we are able to, right, orchestrate, right, using Ansible ad hoc commands also, right. Till now, again, I will say, right, it's not, right, actual infrastructure as a code. It is just, right, executing, right, ad hoc commands and understanding, right, static and dynamic inventory. Here we use dynamic inventory. Similar way, right, if you see the labs, right, in my lab document, I think you should perform this now for the Ubuntu as a client. So यहाँ पे आपको क्या करना है, that's very easy. You don't have to, right, run multiple command. वहाँ पे आपको simple app module use करके name engines करके आप करोगे तो सर्विस भी आपका स्टार्ट कर देगा, ठीक है, और राइट ब्रिंग लेके आ जाएगा. लेकिन अगर मैं अभी रन करूंगा यही अपने, राइट, Ubuntu के लिए, तो क्या प्रॉब्लम आएगा, कैन एनीवन टेल मी. अभी सर अभी एक वहां बार पे मैंने क्या डाला हुआ है, अपाचे 2 डाला हुआ है, राइट. अपाचे 2 कौन से पोर्ट पे रन हो रहा है, 80 पोर्ट पे रन हो रहा है. एनजिंक्स का डिफॉल्ट पोर्ट 80 है, तो ऑब्वियसली यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट. दैट इज, राइट, सेपरेट इशू. यस राजू, टेल व्हाट यू आर आस्किंग. एनी क्वेश्चंस? नो Okay, so I would prefer, right, to do this, and right, now I hope, right, now you can understand, right, what inventory in Ansible is. Is it for everyone? Is it clear now? Yes, Deepak. Yes. Yes. So I would suggest, right, practice it in, right, tomorrow's session we will start with, right, playbook,
And I will just want to give you one clear idea about how Ansible playbook look like. So we will start tomorrow the lab and everything. So understand that basically it uses YAML DSL, and you don't need to go deep in YAML, आपको YAML कोडिंग और YAML लैंग्वेज पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको क्या समझना है, बेसिकली आपको ये समझना है, मैं आपको बता कि there is something called key and value, and YAML represent, you can say, the YAML code represent in terms of what ये की है, इसका वैल्यू ये है, मैं इसको यूज करूंगा। और की इज व्हाट, बेसिकली की इज समथिंग फॉर विच देयर इज अ कोड, फॉर अ कोड विच इज फॉर यू इज एब्स्ट्रैक्ट, आपको कोड नहीं दिख रहा है बट एक की है, वो की का एक मीनिंग है, जो मेन जो मॉडल जो उसको रीड करके एग्जीक्यूट करने जा रहा है, वो उस मॉडल उस कीवर्ड से समझ जाता है कि उसको करना क्या है। टेक एन टिपिकल एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल, यू विल सी सम कीवर्ड लाइक होस्ट, और होस्ट के आगे आप क्या लिख रहे हो, आप डाल रहे हो वेब सर्वर। नाउ think, this web server is same, inventory wala web server hai. Now what you will interpret from this, if I write something like host colon web server, first host is a key and web server is a value. Now this key would be executing certain code behind the scene, right? तो क्या कोड कर रहा होगा वो? SSH something. So first of all it will be reading the inventory file, right? है ना? उस इन्वेंट्री फाइल जो आपने इसको पास किया, उसमें से जाके क्या निकालेगा, इस सेक्शन के जितने भी होस्ट है उनको उठाएगा। यस और नो? यही करना चाहिए इस की को ना, क्योंकि अगर मैं इसको पास कर रहा हूँ वेब सर्विस का मतलब मैं कुछ ना कुछ तो अपने इन्वेंट्री के साथ प्ले अराउंड कर रहा हूँ, और होस्ट को क्या करना है, फेच करना है, होस्ट फ्रॉम द सेक्शन दैट यू हैव डिफाइंड इन द इन्वेंट्री। तो ये की का पर्पस वो है, ठीक है। एंड वो जब प्लेबुक में हम ये होस्ट कीवर्ड यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम इन्वेंट्री को पार्ट्स कर रहे हैं, और पार्ट्स करके उसके अंदर से उस सेक्शन के सारे होस्ट हैं उसका डिटेल लेके, यूजिंग प्लेबुक आई विल ट्राई टू एसएसएच और कनेक्ट टू दैट hosts which are part of this web server section. Is this now clear what I mean to say? Yes or no? Yes. Now think also, this key has what kind of a value? Very scalar in nature, मतलब एक की है और उसका एक स्केलर वैल्यू है, और वो जो वैल्यू है उससे वो कुछ इंटरप्रेट कर रहा है, ले रहा है। सिमिलरली की कुड बी अ लिस्ट। अगर मान लो मेरा एक टास्क करके की है, और उस टास्क में मैंने बोला है कि I basically, task is something, in which I can pass a message, my project, something like that. And this task is basically, nature is what it is, kind of you can say kind of a dictionary data structure which contains a key, and that key also would have certain value, now इसके अंदर मैंने बहुत सारे actions लिखे हैं, जैसे एक name action है, ठीक है। नेम वन ऑफ द एक्शन, जैसे मल्टीपल टास्क हो सकते हैं, हर टास्क का क्या होगा, एक नेम होगा। उस नेम में मैंने बोला है इंस्टॉलिंग अपाचे, तो मैंने एक स्ट्रिंग पास किया जो कि एक डिस्प्ले स्ट्रिंग है, नेम जनरली क्या है, एक डिस्प्ले स्ट्रिंग है, तो डिस्प्ले करेगा, ठीक है। सिमिलरली इसके अंदर मैं मेरे जो मॉड्यूल्स हैं, जो एक्चुअल मॉड्यूल्स हैं, उनको यूज करूंगा। फॉर एग्जांपल मैं बोलूंगा मुझे apt मॉड्यूल से मुझे इंस्टॉल करना है एनजिंग्स का, तो अभी जैसे हमने एडहॉक कमांड किया है, तो यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे नेम इक्वल टू एनजिंग्स, एंड देन स्टेट इक्वल टू stable, and say update underscore cache equal to yes, है ना? तो अगर आप ये देख रहे हो, टास्क एक की है, उस की का सब की नेम है, उसका एक और सब की है एप्ट, और एप्ट के पास भी अपने पैरामीटर्स हैं, आर्गुमेंट्स हैं। तो ये एक तरह का क्या है, ये जो वैल्यू है, अगर आप देखोगे तो ये जो वैल्यू है ये एक्चुअली लिस्ट है, इट इज नॉट अ स्केलर काइंड ऑफ वैल्यू। इसमें बहुत सारी चीजें पास कर रहे हो, नेम, स्टेट, मशीन, तो दिस इज वन रिप्रेजेंटेशन। सेम चीज अगर मैं इसको प्रॉपर रीडेबल वे में लिखूं, तो मैं क्या करूंगा, apt के अंदर में मेरा सब की होगा नेम, और नेम को क्या मैंने पास किया, एनजिंग्स, फिर मैं इसी का पार्ट है क्या, स्टेट, और इसी का पार्ट है वट एवर आर्ग्यूमेंट जो पैरामीटर मैंने इसके अंदर पास किया। तो नाउ एपीटी इज अगेन अ की विच हैज मल्टीपल सब कीज एंड दे हैव देयर ओन वैल्यूज।
तो दिस इज अगेन राइट अनदर रिप्रेजेंटेशन राइट ऑफ राइट प्रिंटिंग। आप या तो मैं एक सिंगल लाइन में डालूं या थोड़ा और रिडल बनाने के लिए मैं डालूं। तो अगर आप ओवरऑल देखोगे तो एंसिबल प्लेबुक तो क्या करेगा, इन कीज को रीड करेगा कि भाई होस्ट की है तो मैं ये करूंगा कि मैं वो वेब सर्वर से इन्वेंटरी से वेब सर्वर सेक्शन रीड करके उठाऊंगा। टास्क मतलब मेरे पास सर्टन राइट मल्टीपल एक्शंस है जिनके कुछ नाम है, मैं वन बाय वन उनको एग्जीक्यूट करूंगा। तो सिमिलरली राइट यू कैन हैव मल्टीपल एक्शंस। तो दूसरा आपका एक और एक्शन हो सकता है यहाँ पे से फॉर एग्जांपल कॉन्फ़िगरेशन राइट, मेकिंग कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस और कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस, ये अलग एक्शन है। इंस्टॉलेशन के बाद मान लो मैं कुछ कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर रहा हूँ, ये एक्शन अलग है। इसमें मैं हो सकता है कुछ मॉड्यूल यूज कर रहा हूँ लाइक राइट कॉपी, राइट कॉपी मॉड्यूल से यूज करके क्या कर रहा हूँ, जो मेरा कॉन्फ़िगरेशन फाइल है राइट उसको मैं चेंज कर रहा हूँ, सोर्स डेस्टिनेशन डिफाइन कर रहा हूँ राइट। तो किस जगह पे मेरा सोर्स है और क्या डेस्टिनेशन कहाँ पे मैं राइट राइट करूँगा। तो इस तरह के इंफॉर्मेशन राइट इसके अंदर डालें। तो ऐसे करके मल्टीपल एक्शंस हो सकते हैं राइट। और हर एक्शंस के अपने किए तो उनका अरेंजमेंट है राइट। इट्स लाइक how you are placing them right in an order right, and right Ansible playbook will execute those task action one by one right to achieve your right end goal, that is what desired state you want right basically। मतलब आपको डालना है अपाचे और अपाचे का पोर्ट चेंज करना है फ्रॉम डिफॉल्ट पोर्ट 82 राइट सम पोर्ट, दैट इज व्हाट इज योर ब्लूप्रिंट राइट। आप ये सोच रहे हो कि मेरे को ये सब चाहिए, फिर उसके लिए आप क्या करोगे, प्लेबुक लिखोगे। सो प्लेबुक इज व्हाट योर डिजायर्ड स्टेट, जहाँ पे आपने बोला है कि हाँ ये पोर्ट यूज होना चाहिए, बट रियल वर्ल्ड में अभी कुछ है ही नहीं। जब आप इसको रन करोगे तो ऑब्वियसली ये जो डिजायर्ड स्टेट एग्जीक्यूट होगा, फिर आपको क्या मिलेगा आपके रिमोट इंस्टेंस पे, यू विल गेट राइट अ वेब सर्वर रनिंग राइट ऑन अ पोर्ट which you want। Now everyone got this point right, what I want to pass on in terms of right this playbook. First of all, you have to understand YAML is nothing but right a key value arrangement. Every key has certain functions to do, certain activities to do, as per that you use those keys, okay? And obviously the ultimate goal is you are designing right whatever your thought blueprint as a code right, and you are writing your desired state what you want right in the real world. Everyone got this part, what I'm saying? Yes. So tomorrow we will be right doing right a basic playbook execution first, right? In terms of right installing and configuring a web server. Then we will do a provisioning lab, right? So in provisioning, right, we will see how we can right create right an easy to instance and create security group and attach security group to those instances. So these are the two right important aspects that we are going to look tomorrow. And remember, it's very important, right? To you understand that Ansible, right, is not meant for what, provisioning. It's not that good in provisioning, but we can do right. We can provision right our infrastructure entities. Ansible is more in terms of what, configuration or implementation, right, related to changes, changing some application parameters, setting up your application, right, and configuring them so that they can run accordingly. But it doesn't mean we cannot do provision. We can provision with some limitation using Ansible also. Okay. Okay then guys, so let's meet tomorrow with those right two labs, and after that in Ansible we have roles. So roles is nothing but right managing your project in a structured order, right? तो मतलब उसका रीजन यही है कि अभी अगर आप पूरा प्रोजेक्ट एक प्लेबुक में लिखोगे तो प्लेबुक तो 1000 लाइंस का बन जाएगा राइट, फिर उसको मैनेज करना मुश्किल है। तो हाउ वी कैन ब्रेक डाउन राइट, तो मैं टास्क्स फोल्डर बना लूंगा। हैंडलर करके भी एक कीवर्ड आप देखोगे कल, तो हैंडलर का अलग फोल्डर होगा, वेरिएबल्स में अलग जगह रखूंगा है ना। तो मैं उस तरीके से राइट फोल्डर स्ट्रक्चरिंग क्रिएट करूंगा जो हम एंसिबल गैलेक्सी से इजीली बना सकते हैं। तो वो सब चीजें हम आगे राइट अभी विजिट करेंगे। ओके गाइस, आई एम डन। एनी क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन दैट आई कैन टेक एंड देन वी कैन क्लोज। एनीवन? I would say do this lab, right? Do hands-on, then you will right get the greater confidence. It's one of the easiest tool, right? I will say right to have in your resume. You can easily add it. There's no much right difficulty, right, or challenge, right, in terms of right learning, right, Ansible. It has a very low learning curve. Okay. Yeah, someone was trying to ask something. Deepak, tomorrow same time, yeah? 9, Yes, tomorrow 9 to 11. Okay. 11. Okay.
Okay, everyone. Then right. Have a good day. Take care, guys. Deepak. Yeah. Thank you.